है कि मैंने ये देखा है कि जो एजेड पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जनरल रेमेडी कैलकेरिया कार्ब है। और ये पेशेंट मेरी एज ग्रुप के हैं और इनको वॉकिंग की बहुत तकलीफ रहती थी। वॉकिंग में तो अभी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर नींद से कुछ और चीजें इनकी सही हो गई। राइट। तो ये नींद बहुत बढ़िया। और ये फाटक की लेबोरेटरी में अच्छा मिलता है, इसके बारे में सिंथेसिस वगैरह में नहीं है कुछ भी। जी। पर रियाज जी, आपने एक रीक्षा किस पॉइंट पे दिया था? सर मैंने दिया था बेसिकली उस पेशेंट ने, आप यकीन माने, मस्जिद में बैठे थे रमजान में, रात को मस्जिद में ही बैठ के केस लिया उसका 2 मिनट में। और एक तो कंटेंट था, वो इतना प्रॉब्लम था उसको, लेकिन हंस रहा था। मैंने कहा कोई टेंशन कोई परेशानी, कहते नहीं सर ठीक हूँ। और दूसरा उसने एक सिम्टम दिया था जो कि मैंने लिंक उसके साथ किया बेसिकली, जिसको हम कहते हैं रिकॉग्नाइजेस एवरीथिंग बट कैन नॉट मूव। और कहता है सर मैं सोया हुआ होता हूँ तो मुझे लगता है ना कुछ चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, पर मुझे लगता है मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। बस ये 2 ही सिम्टम लिए थे, कोकोलस 30 दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी करेक्ट। और सर ये उसको बाद में कोई 2-3 महीने बस एक ही डोज चली है उसको। अच्छा, दी नहीं, फिर रिपीट नहीं की? नहीं रिपीट किया सर। ये पहली डोज जब आप देते हैं उसको एक्टिव रखने के लिए प्लेसबो देते रहिए। हाँ सर वो जरूरी है, वो तो पेशेंट की तसल्ली के लिए। तसल्ली के लिए नहीं है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये प्लेसबो नहीं दोगे उसका पीरियड ऑफ एक्शन थोड़ा रहेगा, पर ये एक्सटेंड होता जाएगा। अच्छा सर, इसमें थोड़ी सी ना कहना चाहिए कंफ्यूजन तो नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। सर मथारू कहते हैं हम तो 1 डोज देते हैं, सर मान सिंह कहते हैं हम भी 1 डोज देते हैं, और डॉक्टर मोहंती कहते हैं। मैंने सर 22 साल का ना ऑडिस पारी मंगवा लिया इंडिया से, कैन यू बिलीव दिस? आई हैव परचेज्ड 22 इयर्स का कंप्लीट। तो आई एम गोइंग थ्रू इट एंड एंजॉयिंग, बट आई फील सॉरी डॉक्टर मोहंती इतनी जल्दी चले गए। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी। बहुत बढ़िया, वो चले गए जल्दी। जस करेक्ट। बहुत क्षति हो गया, बहुत बड़ा क्षति हो गया और मौत का गुजर गए। देखिए, आई कंसिडर प्लेसबो टू बी द बिगेस्ट रेमेडी पॉसिबल। इससे बेटर रेमेडी कोई है ही नहीं। वाई कि हम हर ड्रग को इसकी स्ट्रेंथ से के कंपेयर करके टेस्ट करते हैं। जितने भी ड्रग ट्रायल्स होते हैं, हर ट्रायल में प्लेसबो वर्सेस ड्रग होती है, और प्लेसबो के मरीज हमेशा बेटर होते हैं, ठीक होते हैं। ड्रग के भी ठीक होते हैं। अगर ड्रग के 10% ज्यादा हो गए तो कहते हैं ड्रग इज इफेक्टिव, प्लेसबो को इग्नोर कर दो। पर हर ड्रग ट्रायल में प्लेसबो ने काम किया है। तो प्लेसबो एक बहरूपिया है जो पेशेंट के हिसाब से अपने एक्शन चेंज कर सकता। और अब तो ये हुआ है कि किसी को भी मैं जो प्लेसबो मोड में आ गया है, जब मेरे पास दोबारा आता है तकलीफ लेके, बिना सोचे प्लेसबो की डोज देता हूँ, उसकी जो भी तकलीफ होती दूर हो जाती। नहीं होती तो फिर सोचता हूँ कि अब इसकी क्या पिक्चर आ रही है और क्या देना। नहीं तो फर्स्ट रिएक्शन ये कि प्लेसबो दे और भेज दो। सर रेपिटेशन ऑफ पोटेंसी में मैंने देखा केस खराब हो जाते हैं बाज दफा ना। जी कि थोड़ा सा जो है पेशेंट्स जो है ना, फिजिशियन का भी रखना बहुत जरूरी है। पेशेंट से जब इम्प्रेस हो जाते हैं ना, या उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि मुझे ये तकलीफ हो रही है। मैंने देखा है सर, एक शिंगल्स का हार्पी जोस्टर का केस मेरे पास चल रहा है, इतनी अच्छी रिकवरी हुई उसकी प्लेटिना पे फर्स्ट डोज में, 8 महीनों का केस था। लेकिन वो मेरी गलती की वजह से उसने कहा जी मुझे ये भी प्रॉब्लम शुरू हो गया, ये भी शुरू हो गया। मैंने उसको 200 दी, वो जख्म ही फट गया उसका। अभी बड़ी मुश्किल से काबू करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सर शशि, आपसे एक थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। यूएस में है, आप बता सकते हैं सर वहां पे मेडिसिन कैसे मिल सकती है होम्योपैथी की? मेरे 2 पेशेंट्स अभी चल रहे हैं वहां पे, उनको मेडिसिन का प्रॉब्लम। मैं कनाडा में हूँ, यूएस में नहीं हूँ। अच्छा, कनाडा में है। हाँ जी। यूएस में मैंने कुछ होम्योपैथिक शॉप जरूर देखी है, सम फ्यू शॉप्स। अपार्ट फ्रॉम, लोग मोस्टली अमेजोन पे मंगाते हैं मेडिसिन।
अच्छा सर, अमेजोन तो सर मैंने किया, मेरी बच्चे हैं जर्मनी में, वो उधर से मंगवा लेते हैं, जर्मनी में तो मिल जाती है। अमेजोन पे वो मंगाते हैं मेडिसिन। सर ग्रेटफुल ग्रेटफुल सर ग्रेटफुल। राइट। कनाडा में तो 2-3 शॉप्स हैं, ब्रैम्पटन में है और मिसिसागा में भी एक शॉप है। मैं गया नहीं कभी, लेकिन पेशेंट जिनको एडवाइस किया उन्होंने बताया कि यहाँ मिल गई है मेडिसिन। वो ऑनलाइन डिलीवर कर देते हैं सर, नेचुरली कर देते होंगे। जी शायद करते होंगे, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, मेरी एक पेशेंट है सर हायोसैमस की, वो इधर से मेडिसिन भिजवाई थी, एक्सीलेंट रिकवरी हो रही है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बढ़िया, गुड। रियाज आपकी शक्ल नहीं नजर आ रही मुझे। सर मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था बिकॉज मैंने कहा आप इतने सीनियर लोग हैं तो आप कोई देख लें, हम तो हमारे लिए काफी होता है। एक्चुअली पाकिस्तान में ना सर हम लोग वी आर टेरिबली हैंडीकैप टेरिबली हैं कि हमारे पास ना इसका कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है जिनसे गाइडेंस ली जा सके। मैं भी रियाज जी अभी हाँ, चलो रूबरू हो गए आपसे, बहुत बढ़िया लगा। जी सर नाइस सीइंग यू। जी सर, सेम हियर सर, थैंक यू सो मच। आई एम आल्सो ओवर 60 बहुत अच्छा सर, लगा तो आपको देख के। पिछले 22 साल से होम्योपैथी के साथ हूँ। हाँ। और मेरा ओढ़ना बिछोना होम्योपैथी है सर, बस ये समझ लें। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो डूबे रहते हैं वही जिंदा है इसमें। सर अभी तो डूब रहे हैं। मैंने आर्टिस्ट पारी मंगवा लिया, मैंने एचएचएफ वालों की सारी बुक्स मैंने मंगवाई हैं, डॉक्टर शामिल किशोर का मंगवा लिया। उनके सर मैंने कोई 32,000 के लेक्चर परचेज कर लिए हैं, पूरे 2 साल के वीडियोस अभी देखने हैं। तो वो सल्फर की है ना सर, एक डॉक्टर मथारू कह रहे थे कलेक्ट्स थिंग्स, तो मेरा ख्याल है मैं सल्फर हूँ तो कलेक्ट्स थिंग्स पे ज्यादा जोर रहता है मेरा। बहुत चीजें, एंड ही डजंट वांट टू पार्ट विद इट। जो उसका बच्चा भी है ना जी सल्फर का, वो अपना जी सामान सर। किसी को नहीं देता। हाँ तो लाने के लिए सर मेरा तो खैर थोड़ा सा और चीजों पे डिफरेंट। हाँ जो है ना सर, खासकर अपेयरेंस, नेग्लेक्ट टू सेल्फ अपेयरेंस, वो वाला मेरे में बहुत है। आई एम लीस्ट कंसर्न के क्या पहना है क्या नहीं पहना, कभी भी नहीं हुआ। बढ़िया, शेरवानी पहनने का शौक नहीं हुआ आपको रियाज जी? सर बस शादी में पहनी थी बेटी के बस वो पहन के रख दी है, दोबारा नहीं देखी अभी तक नहीं देखी सर। सर आपने क्या डॉक्टर लुक डी शेपर को आई एम श्योर पढ़ा होगा आप लोगों में से किसी ने। मेरा तो वो फेवरेट है सर, वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथ जो मैंने अभी तक रीड किया है उनको। मैंने तो नहीं सुना उनके बारे में। हाँ नहीं, मेरा भी। हाँ सर उनकी मेरे पास एक तो बी जैन ने बुक उनकी पब्लिश किया, दैट वाज द फर्स्ट बुक जो मेरे कायम में क्रॉस आई, केस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक केस मैनेजमेंट ऑफ द केसेस, वंडरफुल बुक। तो इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद सर मैं उनकी 3-4 किताबें हैं, आई जस्ट गॉट इट फ्रॉम जर्मनी, बेटे से मंगवाई है। मटीरिया मेडिका एक आया उनका 50 रेमेडीज का। तो बट ही इज अ वंडरफुल पर्सन सर, एमबीबीएस है, पीएचडी है, चाइनीज में किया उन्होंने, आप पढ़ेंगे तो यू वुड लव इट सर, बहुत जबरदस्त आदमी। क्या नाम क्या है डॉक्टर साहब, क्या नाम है डॉक्टर साहब? सर डॉक्टर लुक, LUC लुक स्पेस DE स्पेस शेपर SHEPPER। अच्छा, डॉक्टर शेफर, राइट। ये है सर जर्मनी, बेसिकली बेल्जियम के हैं, आजकल यूएस में हैं। और इन्होंने सर हैंडमैन साहब के घर पे जाके वहां पे रिसर्च की हुई है उनकी केस बुक से। अच्छा। हाँ, इनके जर्मन में एक्चुअली वो घर होते थे, उसमें जो बाथरूम वगैरह था वही लैब बनी हुई थी इनकी। केस बुक्स बड़ी जबरदस्त है सर, बट इज अ गुड रिसर्चर सर। उन्होंने ऑर्गेनन को जिस तरह एक्सप्लेन किया है, इट्स वंडरफुल। अगर आपको मिलते हैं सर, एक बुक है उनकी हाइनमैन रिविजिटेड। अच्छा, क्लासिकल गाइड टू होम्योपैथी सर, दैट इज अ वेरी बिग बुक। बी जैन ने पब्लिश की है, पाकिस्तान में लास्ट कॉपी मुझे मिली थी, लेकिन वो मेरा ख्याल है जो पढ़ ले आदमी उसको होम्योपैथी में और जरूरत नहीं है किसी चीज की शायद। अच्छा, हनीमैन रिविजिटेड तो ओशन है। देखो ओशन ऐसा है कि इसकी बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, बेसिक कह रहा हूँ। नेचुरली जितना अभी पढ़ते माइंड पे जाओ आके तो लगता नई है चीज कि मिलती रेफरेंस जाएगी। कैसे पढ़ेंगे। ऐसा है रियाज जी, जो डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स है ना जी, द डिरेंजमेंट पार्ट ऑफ द वाइटल फोर्स, सर वेयर डज इट रिजाइड इन द बॉडी, हाउ डज इट वर्क, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इट इज,
what kind of force of the medicine is, who dispels whom, who affects whom. That's These right. are the basic points. वो कहता है when the body is in harmony, there is a sway of the life force, harmonious sway in the body. Sway is a flow of the force inside the body. ये ऑर्गेनन में है, बहुत बढ़िया हनीमैन ने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो मैंने बहुत बार पढ़ी है रिपीटेडली, द ऑर्गेनन 6th एडिशन एंड 5th एडिशन. तो उसमें जो वाइटल फोर्स का पार्ट है, तो ये जो रूहानियत का पार्ट है ऑलमोस्ट, मतलब इट्स एम्पिरिकली ही डिराइव्स एट दैट बिकॉज इट्स नॉट विजिबल, यू कांट क्वांटिफाई इट कि इसके अंदर 2 किलो वाइटल फोर्स है या 3 किलो वाइटल फोर्स है. अब डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स वो आपकी मैनिफेस्टेशन है कि सिम्टम्स में आ गई, वहां पे आ गई, यहाँ पे आ गई. नाउ बिकॉज माइंड is a very important part of the things, man gets affected through the mind, by the mind, and by modifying the mental symptoms or modifying it, you are able to precipitate the change in the physical body also. So ये जो इसकी implication है, जो ये equations हैं, उसको ठीक गोटियां बिठाना in the right perspective, that takes a long time. And many a time the perception doesn't lead one to that point. फिर हम सिम्टम ढूंढते हैं, कभी माइंड के, कभी फिजिक के, कभी नींद के. I would like to especially mention that our today's session is our special tribute to Dr. Jagpal sir, a veteran and a highly inspiring homeopath and a teacher from Ludhiana, whom we lost recently. Pathakji, I give a lot of importance to feeling of wellness. Sensation of well-being, that is a sign. Sensation of well-being. और उससे रिकवरी जो है ना, दवाई दी पेशेंट को, अगर सही दवाई है तो 10 मिनट में उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं. और 1-2 घंटे के बाद वो कहता है कि ऐसा रिलीफ तो लाइफ में कभी नहीं देखा मैंने. तो ये फीलिंग ऑफ वेलनेस इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको पूरी ध्यान देना चाहिए इस पे. दवाई का असर इमीडिएटली दिखता है हमें फीलिंग ऑफ वेलनेस समझने से. द फ्लो ऑफ लाइफ एनर्जी जो है ना, उसको हार्मोनाइज कर दिया, हार्मोनाइज फेस पे आ जाता है इमीडिएटली. करेक्ट, राइट, खुलर साहब ठीक है. तो बिल्कुल ऐसा ही है. टाइम एज वेल, मतलब 10 मिनट में हर केस में हमेशा नहीं होता, बाज़ दफा हफ्ता भी लग जाता है. देखिए एक्यूट केसेस में होता है सर, क्रॉनिक केसेस में इट टेक्स लॉन्ग टाइम, मेनी टाइम यू लीव इट एंड दिस इज की 5-6 दिन बाद चेंज आया. क्रॉनिक में जनरली स्लीप में फर्क आपको पहले दिखेगा. राइट. लेकिन पेशेंट है ना सर, वो तो कहता है जो मेरा मेन कंप्लेंट है पहले वो ठीक करो, बाकी चीजें बाद में देखेंगे. अनफॉर्चुनेटली एलोपैथी से यूज्ड टू ऐसा. ड्रॉ कई दफा पेशेंट से मैं पूछता हूँ कि दवाई दी थी तो इस पे क्या असर हुआ, तो कहता है जी नो चेंज. फिर मैंने जो लिखा होता है उसमें पूछा इसमें चीज का क्या हाल है, इसका क्या हाल है, कहते ये तो बेटर हो गई है. ऐसे ही होता है. मतलब ये है कि वो अपने माइंड में फिक्स करके आया कि मुझे इस चीज की दवाई लेने में जा रहा हूँ, और वो उसके एक भी कदम इधर उधर नहीं देखता. आप उससे पूछते हैं वेरियस चीज, तो बिना रिमेम्बर किए वो आपको बता देता है. जब आप दोबारा पूछते हैं कहते ये तो बेहतर हो गई है मेरी, बट आपको आके कह देगा कि मैं तो ठीक, कोई चेंज नहीं आया मेरे में. राइट. सर शेर है हमारा उर्दू में ना, कहते हैं मिल जाए तो मट्टी, ना मिले तो सोना है. बिल्कुल. जो ठीक हो जाता है उसका जिक्र नहीं करता, जो नहीं कोई जिक्र नहीं करता, वो तो बाय द वे हो गया. सर मेरी एक पेशेंट है, वो उनके प्रोसेस का प्रॉब्लम था. कहती है मुझे नेगेटिव ख्यालात आते हैं, इतनी परेशान होती हूँ सुबह सवेरे. फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद आई तो मैंने पूछा हाँ जी क्या हाल है, एग्जैक्टली जो सर ने कहा, सर कुलार ने,
कि नहीं कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब, मेरे घुटनों में भी दर्द है, इधर भी है। मैंने कहा जो वो आपका मेन कंप्लेंट थी ख्यालात की, नेगेटिव ख्यालात, परेशान, वो क्या? और डॉक्टर साहब वो तो ठीक है, वो तो नहीं आते अभी। वो तो ठीक है बाय द सर। वे उसने बताया था, तकलीफ तो उसकी घुटनों और जगह थी, वो तो बाय द वे गलती से मुंह से निकल गया। और चीज सर कहते हैं डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई है जिससे वजन कम हो सकता है? मैंने कहा अभी आपको होश आ गया है, अभी वजन पे आ गए हैं भाई, आपको होश आ गया है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। राइट पर्सपेक्टिव में जिंदगी को देखना शुरू कर दिया तो होश तो आ ही गया। होश तो आ गया, बिल्कुल। लेकिन सर फेलियर्स भी साथ साथ चलते हैं, मुझे बड़ी तसल्ली ऐसा है, मिलती है कि मैं वो डॉक्टर फेलियर लोग से को तो हम पढ़ रहा था। सीखते हैं, हम डॉक्टर सीखते हेलमन कहाँ साहब हैं। भी 6-6 महीने केस पे लगे रहे, बाज दफा नहीं केस सॉल्व हुआ। ऐसे बहुत केसेस उन्होंने नरेट किए हुए हैं। ठीक कहते हैं आप। हाँ जी सर, तो बस ये सर मेरा ख्याल है बेंटर सर उस्ताद आप जैसा जो है ना, आप यकीन माने मैं बहुत शिद्दत से महसूस करता हूँ कि यार मुझे अगर यहाँ पे अवेलेबल होता तो मैं तो 2 साल लगा लेता उनके पास, कहीं पे भी चला जाता, बट है नहीं हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। होम्योपैथी जो है ना सर, इसका क्वालिटी होम्योपैथी इज नॉट देयर, नॉट एट ऑल। हाँ नहीं होगी सर, कुछ धीरे धीरे सर ये कहीं ना कहीं। बहुत कम सर, बहुत कम, नहीं बहुत कम सर, मुझे पता है ना सर, मैंने सारे टॉप जो है ना लेजेंड्स देख रहे हैं, उनसे राब्ता भी किया है। माइंड पे तो खास कर जो है ना सर, वो क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए। जिसको उस्ताद के पास बैठ के, आप मेंटर के पास बैठ के वन फील इट के हाँ जी डॉक्टर मथारो है सर, पहली दफा मैंने लेक्चर सुना है इनका, उसके बाद मैंने अभी तक यूट्यूब 7 घंटे का एक सेमिनार है इनका सल्फर का, पूरा देख लिया। तो आज डॉक्टर मुझे बड़ी बथारू एंड डॉक्टर यादवेंद्र। हाँ, ठीक है। शुरू कर रहे हैं अब हम विड्रॉ कर सकते हैं ताकि जी जी इनके Now I would like to call Dr. Tanveen Paul. Welcome, Dr. Vinod Singh sir. बेसिकली ये जो वेलकम कॉलेज के डिग्निटरीज का किया या कॉलेज के स्टाफ का किया, मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको रिवर्स कर दिया जाए। बेसिकली वी आर होस्टिंग इन आवर कॉलेज एंड वर्दी स्पीकर्स, इसको थोड़ा रिवर्स कर दो। We welcome all the speakers, all the dignitaries, all the guests to this forum. Thank you very much. I will request Dr. Rajesh sir to come on the stage. Now I would like to call Dr. Jagpal on the stage. I would request all the dignitaries to come on the stage and start with the lab lighting.
ऐसे लगे फोन को ब्लूटूथ से कैसे जोड़ते हैं? सेटिंग्स को ऐसे भी निकलता है। सेटिंग्स को आप स्कैन कर ये कनेक्टेड है वाली कनेक्टेड है ना आ रही है आवाज वॉल्यूम साइड से कर लो ना अब आ रही है आवाज आपको करो अंदर कनेक्टेड ही Let's join our hands for the prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें
होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। कितनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मनमन। अपनी करुणा का जल को बहा के, करके पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। Now we will keep 2 minutes silence to pay homage to Dr. Ramakant Jagpal. Om Shanti. Please take your seats. Warmest regards to all present. We welcome you all to the one-day scientific seminar hosted by the Iihp Punjab State in the memory of late Dr. Lmhmc. Those who are joining us for the first time, I would like to elucidate the history of Iihp and the ideation behind its foundation. Iihp, that is the Indian Institute of Homeopathic Physicians, is an internationally recognized pioneering national organization who is striving hard for the comprehensive progress in development of homeopathic system of medicine, brought into being by Dr. Dr. A. Saxena, Dr. Divan Christian, Dr. J.N. Chasni, Dr. Dilip Saha, Julian Tandon, and many more stalwarts, with them being the pillars of this institution. At present, headed by Dr. Tanveer Hussain as National President and Dr. Sudhanshu Arya as National Secretary, along with many other apostles who are holding Iihp's flag high and uplifted. Now I would like to call upon the stage respected Dr. Vinod
Shamila Sir, Principal of LMH, to say precious words. Dr. Kapoor, Senior Professor, our speaker, main speaker, Dr. H.S. Matharu, and other speaker, Dr. Jagpal and Dr. Sukha. It is a great honor for me to welcome all the delegates in our esteemed institute, Lmhmc Medical College, Ludhiana. I welcome esteemed members of the Institute of Homeopathic Physicians and doctors and dear students. We have gathered here today to pay our heartfelt homage to the memory of Dr. Jagpal, a renowned homemaker. As we come together on this occasion, we remember a dedicated leader who left the indelible mark on the field of homemaking. His commitment to excellence and compassionate care has inspired generations of practitioners and continue to resonate within the corridors of MAHAVIRA Homeopathic Medical College and Hospital Ludhiana. His unwavering commitment to the well-being of his patients, his deep understanding of homeopathic principles, and his compassionate approach to the healing has left an enduring legacy. Today we reflect on his life and work, which have touched the lives of countless individuals. His tireless efforts to advance the practice of homeopathy have not only brought relief to the suffering, but have also enriched our understanding of holistic healing. Thank you. Welcome you again in this esteemed institution. Now I would like to request our worthy director of LMH, Dr. Iihp Punjab sir, to share his words. Respected dignitaries sitting on the first row and dear colleagues, homeopath from the different parts of Punjab. So today we are having a one-day seminar in the loving family of Dr. Jagpal. Basically, last time when the election of this seminar, IEP was there. That time, मैं एक रिक्वेस्ट की थी कि वेबिनार जो है या वेबिनार टाइप का मीटिंग जो होती है उन्होंने अवॉइड करके फेस टू फेस डॉक्टर ना इंटरेक्शन करो वो ज़्यादा अच्छी होती है। ये एक अच्छी बात है कि ISB ने पहला स्टेप आज जो रहेगा अब आज सेमिनार कर रहे हैं कि ये सेमिनार जो है ये मकसद जो है अपने आप को फ्रेश होना
नॉलेज हर डॉक्टर को है अपनी नॉलेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉलेज लिमिट कोई भी नहीं है, जितना मर्जी सीख लो थोड़ा ही थोड़ा नॉलेज लाइक एंड वी आर सिटिंग ऑन द वन एज ऑफ दैट सीट नॉलेज वास्ते जितना भी कुछ सीख लो थोड़ा ही है इस मेंटालिटी का जो सैमिनार हो रहा है तो वो बेनिफिट देगी ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਪੈਥੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਈਐਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਰਮਾਕਾਂਤ ਜਗਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਹੀ ਸੀਗੇ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 जी अभी इकट्ठे रहे तो कोई चांस ऐसा नहीं सीगा कि हर महीने जी नहीं मिलते किसी ना किसी काम मिलते ये गल्लां सब दो ही होंदियां कि होमपैथी का की हो रहा है की बनूगा प्रॉब्लम एक ही है कि होमपैथी का की बनूगा वो प्रॉब्लम यही है आज साढ़े वास्ते सामने भी आ रही है कॉलेजों की एडमिशन प्रॉब्लम है बच्चों का हूँ बदी इंटरस्ट पर्टिकुलरली पंजाब के लोग बाहर जा रहे हैं ये सारी गल्लां है कॉमन प्रॉब्लम है कि डेवलपमेंट वास्ते एज ए इंस्टीट्यूशनल बेना भी सोचते थे आईएचपी भी मैं सोचता क्योंकि मैं आईएचपी मेरा मैं बहुत काम किया है सोच भी रहे हैं कि किस तरीके पंजाब के आईएचपी स्टैंड करिए कि मैं साढ़े जिले आईएचपी के नवे लीडर है मुबारकबाद देना है कि उन्होंने इस स्टैप शुरू किया है ऑर्गेनाइज किया है नो डाउट बेशक राजनीति आए है वाइस प्रेसिडेंट साहब बैठे है सेक्रेटरी साहब सरपंच आए भी है ये जो आईएचपी का ऑर्गेनाइजेशन करनी फंक्शन करना बच्चों परस्यू करना लर्निंग पॉइंट वास्ते अगे प्लेटफॉर्म पर लैके आना बहुत ही अच्छी गल हैगी कि मैं ये सारे प्रोग्राम वास्ते ऑर्गेनाइजर को स्पैशली आईएचपी के प्रेजिडेंट सैकटरी वाइस प्रेजिडेंट बाकी सारे ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत मुबारकबाद देना है थैंक यू Now I will request Dr. Sushil Salotra, the Dean of MAHAVIRA Medical College and Hospital, to come up and bless us with some golden words. On the dais of the dais, doctors, students, Dr. Ravinder Kochar, director, has elaborated many aspects in a very short time. He has touched all the aspects. It is a fact that homeopathy has grown many fold in the last few decades. People, they love homeopathy. They love to take homeopathic medicines. They consider homeopathy as second popular choice for healthcare. But people, they hesitate for putting their children in homeopathy. I remember when this college started in 1976 with Lmhmc diploma course, we were having 120 seats in this college. And we're having two sessions, morning session and evening session from
comprising of 60 seats in each session. And the number of boys around 70%. It slowly, gradually declined and reversed. With the evolution, there was a need to develop more homeopathic institutions. And fortunately, we are having 6 homeopathic institutes in Punjab. But now the situation is very clear. We are having only 2 homeopathic institutes in Punjab. And out of those 2, one is still struggling. Even we are struggling. We are getting half of the sanction fees. There are many factors affecting this scenario. But general interest of public and students and candidates, that has declined. So that is a matter of concern. How many of us and how many established people they want to join homeopathy as a profession? So that is a matter of concern. Otherwise, as far as our system is concerned, globally, if we see, the system is being practiced in more than 100 countries. It is being popularized daily. And many organizations, they are participating just to encourage the system. And Iihp, of course, is one of them. I am fortunate that I was privileged to be the president of Ludhiana unit of Iihp first time when it was started. At that time, there was a lot of encouragement among the homeopaths. Then gradually it declined, but now Dr. Ravinder Kocharji, he had been at a very high post in the central this body of Iihp. He has encouraged the people of Punjab, practitioners of Punjab, students of Punjab to join this organization, because this is the only organization in India which constitutes the association of qualified homeopathic practitioners or qualified doctors. So we must encourage this system from all the platforms, from student side, from study side, from education side, from practice side, as well as from the research side. So at this occasion, it's very different kind of scenario today, that on one side we are paying homage to one legend of Dr. Jagpal. Our deep sense of grief and condolences are with the family. And on the other hand, since we are lightening towards the brightness of the homeopathy by organizing this seminar, I extend my warm welcome and good wishes to the speakers and also to the delegates, that they will have some out of this. It is a sort of manthan, so we'll get something from this seminar. So go for the best for this seminar. Thank you. Now I would like to call upon Dr. Meenu and Dr. Praveen to facilitate our worthy principal sir, Dr. Vinod Singh. I would like to call Dr. Yadvinder ma'am and Dr. Vipin sir to honor Dr. Ravinder Kocharji.
stage Dr. Pradeep Saini and Dr. Mahajan to honor Dr. Sushil Salodra. As we all know, on 26th October 2023, we launched a priceless gem of homeopathy, Dr. Jagpal. We wholeheartedly dedicate this seminar to Dr. Jagpal. His contribution to homeopathy is far beyond explanations and words, and who can articulate better about a father than a son? So I would like to call upon stage his loving son, respected Dr. Manish Jagpal, to pay a heartfelt tribute to late Dr. Jagpal. Please welcome him to the big round of applause. First of all, my respect to all the seniors and principals, and all the seniors. I would like to thank Iihp and the whole high table for dedicating this seminar to my father. It's a privilege and honor, and it's a gratitude from my side that along with dedicating this seminar to my father, they have given this opportunity, this stage to me for sharing the whatever little knowledge I have with all of you. It's very heavy-hearted for me to share life of my father, a legend in front of you. कुछ शख्सियतों को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, but still I will try my best to share the journey of his life. He started his life at a very ground level. Conditions of home were not very good. 2.5 रुपए दिहाड़ी तो उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की थी. You can imagine. He pulled rickshaw, he sold milk, worked as a laborer. There was a vision behind that. He joined PAU as a clerk, and पुराने लोग सारे जानते होने Dr. MS Randhawa होते सीगे. We used to manage PAU and everything, and he saw some skills in him and hired him as a clerk, his driver, and multiple tasks he used to do. PAU अगर आप गए हो ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. If you will go and see sometime, it was his labor job there that he did in that. सोच सीगी बहुत उच्ची,
and there was an interest to become doctor, but घरों मारे हालात होने के कारण वो हसरतां पूरियां होंदियां नजर नहीं सी आंदियां, बट पता लग गया कि नवा कॉलेज खुलिया मानव केंद्र, उस एडमिशन ਲਈ भी फीस नहीं सी, एंड his elder sister मेरे भूआ जी, she was a teacher, उन्होंने अपनी सारी सेविंग पिताश्री ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ so that he can complete his aspirations to that, and वो दिन सी के उस तो बाद उन्होंने मुड़ के पीछे नहीं देखा। सुनेत पिंड प्रैक्टिस शुरू की थी, जिथे बैडेड हॉस्पिटल सी, एलोपैथी चल रही सी, इंजैक्शंस लगते सी, डिलीवरीज होंदियां सी, पर as Hahnemann's thought, he was not very satisfied with that kind of practice somewhere, because उस वेले होम्योपैथी दे जो हालात सीगे वो तुसी सब जानते हो, ना कोई पढ़ाने वाला ना कोई सिखाने वाला। वो तो शिफ्ट होके क्लिनिक ले आंदी कुमार मंडी, उन्हें डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे सी कुमार मंडी की क्लिनिक का, और प्रैक्टिस शुरू की थी। मिक्सोपैथी चलती सी, पेटेंट्स भी चलते सी। मैं बड़ी क्लियरली, I'm sorry, I'm a person who is very transparent, so I'm just sharing what it was as it is and how the transformation happened. Okay, it's gone now. आप फोन को फ्लाइट मोड पे कर सकते हो, so that the recording is also not disturbed. So थोड़ी पी लेंदे सीगे, लीवर खराब सी,
डॉक्टर प्रेम साहब नमस्कार। नमस्कार। मुझे आवाज नहीं आ रही या किसी को भी नहीं आ रही? कुछ नहीं आ रहा। अब वीडियो तो आया है, आवाज नहीं है। अच्छा, नहीं, बंद हो गया, बीच में चल नहीं रहा, आवाज नहीं आ रही, फोटो दिख रही है। डॉक्टर यादवेंद्र जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। सेमिनार की वॉइस नहीं आ रही। ये हो रहा है ना सब।
वो शकरकंदी निकाल ली अंदर से, बाहर है। मैंने सुबह निकाल के रख दिया था, पर कहाँ है पता नहीं। ये पड़ेगी ना, पता नहीं है। डॉक्टर प्रेम जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, पावर पॉइंट ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, हाँ वेरी गुड, थैंक यू। भूल गया यार विंडोज वाला सब। या so there is a 60 by 51 millimeter of a space occupying lesion in the interpolar region of kidney. So there is post void urine also. It's very important how to read the reports, understand what's the pathology, what could be the prognosis, आगे क्या हो सकता है, कैसे proceed करना है। तो स्कैन आगे किया गया तो शक पड़ा कि it can be a neoplasia, renal cell carcinoma, and patient was planned for surgery. आप सिचुएशन देखो कितनी सीरियस है। सब रिपोर्ट्स थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। I don't know because of I don't know how to recover that because I have to change the computer from yeah
Yes, it is there. Just give me a second. You can see here, patient was taken for surgery, but operation was deferred. पेट खोल लिया और खोल के ऑपरेशन नहीं किया because the tumor was so advanced that it was inoperable, and inoperability was explained to the patients and attendant. इसको घर ले जाओ, सर्जरी नहीं हो सकती है, घर जाके मैनेज करो. So with some hope, patient came to me and it was not a full blown case taking, but as the patient came, क्या होता है कई बार आप पेशेंट आता है, आप उसको बोलते हो नहीं अपॉइंटमेंट लो. I think you lose the moment of heat at that time. वो जिस टाइम आपके पास तकलीफ लेके आया है, there is a heat in the moment and that's the time you can get the gold out of the history. उस अपॉर्चुनिटी को मुझे लगता है मिस नहीं करना चाहिए. तो मैंने थोड़ा केस लिया. He told me कि 8-9 साल से ये तकलीफ चल रही है मुझे, और यूरिन में कभी ब्लड आता है, कभी पीसेस आते हैं, लेकिन गरीब होने की वजह से मैं कुछ खास किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा पाई हूँ. कभी पेन किलर खा लेती हूँ, बहुत ज्यादा दर्द होती है तो इंजेक्शन लगवा लेती हूँ. And as you know, painkillers also have a very bad effect on kidneys. तो अभी डॉक्टर को क्यों दिखाया? क्योंकि पेन किलर्स ने काम करना बंद कर दिया है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई यूरिन में. इतनी पेन हो रही है, वॉमिटिंग्स आ रही है, चक्कर आ रहे हैं. शी इज डूइंग स्टिचिंग एट होम, क्योंकि हस्बैंड भी अभी सिचुएशन है कि बहुत ज्यादा कमाता नहीं. She is the main source of income in her family. और उसका मेन वरी क्या है कि मेरे बच्चे, there is a young son, उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है. अब देखो हिस्ट्री में पेशेंट कुछ भी आपको फ्लो में बोलेगा, जो भी बोलेगा उसको बोलने दो, उसको एक्सप्रेस करने दो, और देखो उसमें से क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट निकल के आती है. टाइम आज कम है, बट जितना मैं अपनी तरफ से अपनी सोच आप लोगों से शेयर कर सकता हूं आज करूंगा. तो उसको वो इतनी मेहनत नहीं करता है डॉक्टर, सोहल है, छेती थक जाता है, इन्ना नहीं पढ़ता, हार्ड वर्क नहीं करता, मेहनत नहीं करता. मैं चाहती हूँ बहुत मेहनत करे और बहुत ऊपर जावे लाइफ. You can see the ambitious nature of the patient here, not only for herself, but also for the son. शादी से पहले कंडीशंस घर में जो थे अच्छे नहीं थे. यहाँ पे डॉक्टर अच्छे हैं, यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे एनकरेज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. लेकिन मेरे खुद के फादर, ही वॉज ड्रंकर्ड, बहुत पीते थे, घर में कलेश रहता था, और मैंने माँ बाप को लड़ते हुए ही देखा है हमेशा, कभी शांति नहीं देखी घर में. और मेरा पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप लव हेट था. मैं उनसे प्यार तो करती थी, पर मुझे कभी वापस प्यार नहीं मिलता था. और पिताजी से ये गिला भी रहता था कि वो पीते हैं और घर का कंडीशन नहीं देख रहे हैं और सब.
तो मुझे लगा ये फैमिली, मेरे भाई बहन, वो सब और बर्बाद हो जाएगी, मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। और बहुत मेहनत की, और इतनी मेहनत की, देखो 8-9 साल से डॉक्टर साहब ये बीमारी चल रही है, लेकिन मैंने इसको टोटली इग्नोर करके पेन किलर इंजेक्शंस लेके बस काम करती गई, हार्ड वर्क करती गई, हार्ड वर्क। दर्द में भी काम करती गई, गरीबी मिटानी है। और पेरेंट्स, माँ का अपना दुख था कि हस्बैंड पीते हैं, क्या करे, तो माँ से भी अप्रिसिएशन नहीं मिली कभी। यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ डिजायर फॉर अप्रिसिएशन फॉर हर एफर्ट्स। शी इज अ वेरी हार्ड वर्कर, वेरी एम्बिशियस, बट इमेजिन 8 to 9 years undergoing cancer and all that, taking injections of painkiller and kept working. स्कूल में एक टीचर ऐसे मिले जिन्होंने अप्रिशिएट किया, हेल्प की, गाइड किया, थोड़े पैसे की भी मदद की, और जिनकी वजह से मैं थोड़ा पढ़ पाई। मेरे घर वालों को नहीं मालूम कि मैंने +2 कैसे की, उनको शायद पता भी नहीं है कि मैंने +2 की। घर में जो सिचुएशन थी चलती रही, लेकिन मैं अपनी मेहनत करते लगी रही। मैंने पूछा क्या एक्सपीरियंस रहा, इस तरह की जिंदगी का एहसास क्या रहा। एहसास डॉक्टर साहब एक गिला रह गया कि पिताजी से कभी एप्रिसिएशन नहीं मिली, उन्होंने कभी मेरी इतनी मेहनत को एक्नॉलेज ही नहीं किया। और आज अगर वो होते तो I would have felt good. कभी घर लगा ही नहीं, कभी लगा ही नहीं that I belong there. तो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस मिसिंग थी। I felt I was never included as a part of a family. So I'm concising the history for you, but I've shared the whole gist of the case. Hobbies, स्पोर्ट्स में हमेशा एक्टिव है। ड्रीम्स ऑफ एक्सीडेंट, म्यूटिलेशंस, जैसे बाजू कट गई, सिर कट गया, खून खराबा हो रहा है, वॉर जैसे सीन्स चल रहे हैं, ऐसे ड्रीम्स आते हैं। एंड हैवीनेस ऑफ ब्रेस्ट्स बिफोर पीरियड्स, and history of frequent UTI, which was heavily suppressed by allopathy. So, anybody would like to share their कंसीव इम्पोर्टेंट है इससे, वेरी इम्पोर्टेंट। और ये केसेस जो है ना आजकल इतने ज्यादा हैं ना, मैं अपने प्रैक्टिस में मैंने कहूँगी मतलब ऑलमोस्ट फीमेल जितनी भी आती है ना उनके से 95% ऐसी कैसे। थैंक यू। I got it somewhere, it resonated. Yes. Very good suggestion. That something like carcinosis, right? Any more suggestions? You don't need to be right. जो भी आ रहा है मन में, neglected from everywhere. very good. So what I say is forsaken feeling कहीं ना कहीं बहुत important है. You agree or not? She wants appreciation from, especially her father. हाँ, जो एक गिला रह गया, कुछ ऐसी फीलिंग रह गई थी यार. Speak in the mic so everybody can listen. Is she having kind of an absent father syndrome like that? You can say that. You can say that. Of course. उसको जोड़ेंगे सब फीलिंग्स को बाद में. But let us see this. Carcinosis like
desire for appreciation, for sake of finding, despite getting disappointment here. She said love-hate relation. और फादर के जाने का इतनी है, वो चले गए, आज होते तो देखते कि मैं कहाँ पहुंची हूँ। I'm really happy Dr. Pocher ने आज काफी ऑनलाइन हो गया, आपने सामने बात में जो मजा है, जो आनंद है, वो स्क्रीन पे नहीं आता। एंड यू सेड कहीं ना कहीं वो अपनी बीमारी को इग्नोर करती रही। सो हार्ड वर्क, लेकिन वर्किंग इग्नोरिंग दैट। इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे इसको? होना चाहिए ना ये पार्ट ऑफ लर्निंग। एनी मोर? एंगर भी है, हाँ, इसका और एक रिलीजन से क्योंकि नीचे से वो चाहते हैं कि उसका बच्चा जो है वो पढ़े, और ये भी तो दैट्स व्हाई वो रगड़ती जाती है खुद को। शी वाज द ड्रैग। जो आप दूसरों को करना चाहते हो बेसिकली आपकी खुद की ये सोहल है, मेहनत नहीं कर पा रहे आप, है ना? चलो लेट्स अंडरस्टैंड। आई विल शेयर माय फीलिंग्स, माय थॉट्स। Death of loved one, need for a father-like figure or a master, appreciate, shabash, all acceptable, very good. That was a vacuum that you felt to be filled by somebody. अगर वो टीचर से मिली वो चीज तो फिर बहुत अच्छा लगा और अच्छा परफॉर्म किया, वेरी अप्रिशिएटेड। गरीब घर में तो सब पैदा होता है, लेकिन हमारा पूरी जिम्मेदारी ले लेता है पूरे परिवार की अपने भी छोड़ो, इन-लॉज की भी जिम्मेदारी इसमें ली, बच्चों की एंजाइटी और बहुत अनसेंशियस ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबल। अब इसको देखिए, किंगडम डिफरेंशिएशन में सिंपल सी आपको मैं 3 फंडे बता देता हूं। If things are affecting you, it is like a plant. If there is something wrong in me, it is a mineral. If you are blaming a situation or other person, there is a me versus you, then it is an animal. और हो सकता है इस केस में क्योंकि हमने बहुत अपॉइंटमेंट देख लिया, डिटेल में नहीं दे, बट देयर इज अ एसेंस, देयर इज अ subtle expression of an animal in the circumstances, partner की वजह से, लड़की की वजह से, कोई मुझे appreciate करे, you can see there is one me and one other, again and again it's repeating in the case. तो अगर हम एनिमल के बारे में सोच रहे हैं तो is it a predator animal? No, it's a victim animal जो कि सफर हुआ है, जिसने सहा है और सहने के बावजूद बहुत करती गई है। One of the students was saying कि उसने अपनी डिजीज को इग्नोर करके लगी and there was a need to belong, need to appreciation. मैं खुद के घर में अपनी फैमिली को बिलोंग करना भी, it's a very important thing of mammals to be
included in a group. To be part of a group. कौन सा मेथड सोच सकते हैं हम? LACAN. One suggestion is LACAN. Very good. बहुत अच्छी सजेशन है बेटा. बट क्या अभी हमारी नॉलेज थोड़ी लिमिटेड है, तो इफ शी एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ डॉग, डॉग में क्या बहुत क्लोज हो आप बैठने के. बाय द वे आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू. बट क्या डॉग इतनी मेहनत करता है? एप्रिसिएशन चाहिए डॉग मास्टर से, उसके लिए सब करेगा. हाँ ब्लेम भी करेगा. हाँ ये भी कर रही है ब्लेम वो सर. हाँ वो वैसे भी कर रही है, ये अपना लगे रही. लैक डेथ की सजेशन आ रही है. व्हाट इज लैक डेथ? इज अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल. और उसमें क्या अब्यूज की हिस्ट्री ज्यादा है. लैक डेथ में बहुत मेहनत करती है अपने परिवार के लिए, लेकिन उसके साथ साथ लैक डेथ का क्या है, बहुत कंप्लेनिंग रहती है कि मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, मुझसे बहुत काम लिया जा रहा है. बट ये तो खुश हो रही है, काम लो, एप्रिशिएट करो और काम लो, तो मैं और अच्छा परफॉर्म करूंगी. He's not a sheep like, cow like, not like, just important mammals. कभी differentiation फिर डिटेल में करेंगे, but just understanding this case. एक वर्ड लिखा है मैंने यहाँ, स्टोइक. स्टोइक आप अपने मोबाइल पे डिक्शनरी खोल के उसका मतलब देखो क्या होगा. STOIC. स्टोइक. What is it? Person who can suppress his emotions, his pain, his suffering, and still continue to work hard. ये हिस्ट्री जो है, इतनी पेन में इंजेक्शन दे देके साथ में काम करते हुए लगे रहना, अपने दुख को इग्नोर करते हुए लगे रहना, it is not a part of dog or cow. और साथ में ambitious. अच्छा अब ये तो स्टोरी पार्ट हो गया ना, केस का एक्सप्लेनेशन, ठीक है. बट थोड़ा लॉजिकल भी होना चाहिए. इट्स अ लेस प्रूव्ड रेमेडी, नॉट इन द फर्स्ट इनिशियल पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज बाय हैनिमैन. बट स्टिल इफ वी रिलेट द केस एंड द स्टोरी ऑफ ब्लैक इक्वाइनस, यू कैन सी इट्स वेरी प्रिसाइजली पिन पॉइंटिंग द होल हिस्ट्री. क्या है थोड़ा लैक्यूफाइनम का मटेरियल मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि मैं जो भी कर रहा हूं ना मेरी खुद की तसल्ली हो रही है कि मैं बहुत अच्छा कर पा रहा हूं, ना कोई और मुझे अप्रिशिएट कर पा रहा है. और अप्रिशिएट मिल भी जाए तो भी वो कम लगता है, थोड़ा लगता है, और अप्रिशिएशन चाहिए, उसके लिए वो और मेहनत करता है. घोड़ा समझ रहे हो ना, महाराणा प्रताप का चेतक क्या जान दे देगा, लेकिन मास्टर पे आंच नहीं आने देगा. Never said, so conscientious that they will be never satisfied out of doing their duty. जितना भी वो करते हैं. जब घोड़ा यूजलेस हो जाता है क्या करते हैं उसको? गोली मार दो, खत्म अब तेरा काम, तू काम कर नहीं रहा. So this fear of becoming useless is a very, very important part. और उस fear के पीछे ही तो काम कर रही हूँ, उससे काम इतना करा क्या है? कहीं अगर मैं यूजलेस हो गई तो मुझे अबांडन कर दिया जाएगा. नोबल, dignified, not haughty, genuine dignity. वही जो आपने कहा कि फादर से एप्रिसिएशन, लेकिन अगर मैं उसको अगर काम नहीं करूंगी
है, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, तो मैं ये क्या उसने क्या कहा? उससे कई बार हम अपनी फीलिंग्स और पेशेंट की फीलिंग्स को आपस में मिक्स कर देते हैं. So I know somewhere she has resonated with you some part. I think I should be near the receiver now. तो कहीं ना कहीं वो रेजोनेशन आपसे है, बट कहीं ना कहीं हमको खुद की फीलिंग को वहां रिलेट कर रहे हैं. उसकी फीलिंग क्या थी? उसकी फीलिंग यही थी कि मैं इतना काम करूं, चाहे मुझे जितनी भी दर्द हो रही है, कि मैं किसी के काम आ सकूं, किसी का फायदा कर सकूं, अपने सिबलिंग्स को कहीं पहुंचा दूं, अपने बच्चे को कहीं पहुंचा दूं. Need to be useful and fear of becoming useless is the center of that. उसका डर ये था. She was also afraid of losing that validation which she was getting from her mom. Yes, of course. तो घर की अपने घर की सिचुएशन इतनी फादर ट्रांसफर्ड है, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, बट वहां जाते ही उनको क्या लगा, मेरे फादर इन लॉ मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो उस चीज में उसको एक सेटिस्फैक्शन. Yes, of course. That's why she kept working in so much pain. इसको चार्जिंग पे लगाओ, फिर बैटरी In the meanwhile, more thoughts that are coming. My intention was to share some new remedy with you, new understanding. देखो कि व्यक्ति हर मेल होता Exactly same center, exactly same. We are all human beings. Doesn't matter. Male, female, बाद में, पहले तो आत्मा है, human being है. But male doesn't do. They do, but not like this. मेरा बेटा कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मेरा फादर. उसमें कुछ और आए. वो तो बात करने से पता चलेगा ना क्या है. अंदर तो मेल फीमेल बाहर नजर आ रहा है. जो फेमिनिज्म और मैस्कुलिन फिनोमेना है ना, वो अंदर होता है. बट हमने भूल जाता है कि उसके बच्चे हैं भी या नहीं. लेट मी कंप्लीट एक्चुअल जो मैस्कुलिन और फेमिनिन फिनोमेना है. मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे, 120 किलो का रेसलर सामने आया, केस दे रहा है, एंड यू कैनॉट इमेजिन पूरी केस हिस्ट्री रोई. इतने टिश्यू किसी फीमेल ने नहीं यूज किए जितना उसने कर दिया. तो हमें बाहर का मेल फीमेल नहीं देखना, हमें अंदर का मैस्कुलिन और फेमिनिन फिनोमेना. ऐसी लेडीज है who go on very high post, who dictate. वो क्या है? Are they male or female? अंदर फिनोमेना मैस्कुलिन है. That's why they go to that high place. तो इस फीमेल में भी आप देखोगे बहुत मैस्कुलिन
साथ में फेमिनिन भी है, दोनों है। ओके, so idealistically related, dreams of unsuccessful efforts is a central theme of black economy. Pushing yourself beyond body limits, stoic, काम करते 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 कोलैप्स आ जाना, थक जाना, टूट पे गिर जाना। हॉर्सेस को इतना भागना अच्छा नहीं लगता, एक्चुअली इतना उन्हें बताया जाता है। थैंक यू। And these are some pathologies that patient can come with: back pain, arthritis, and हनुमान समझते हैं? जो मास्टर ने बोल दिया जय श्री राम, वो हो जाए, चाहे पहाड़ उखाड़ के लाना हो। That matches with the theme of black economy. That's how they work. अगर आपको एक बार रिलेशनशिप आपका हॉर्स से बन गया, तो they will do everything for you. They will sacrifice themselves for you. Yeah, and Mahazans, I know it's a dubious topic, but always understand Hindustani Mahazans are different and modern Mahazans are different. But ये मिक्स है तीनों Mahazans का, नाम से कैंसर Mahazan, tubercular Mahazan and leprous Mahazan all. तो जो आपने थीम म्यूटिलेशन का देखा, एक्सीडेंट्स का देखा, वो लेप्रस कवर है। और जो थीम एस्पिरेशन का है, कुछ करने का, और जो स्टोइक है वो कैंसर Mahazan। So it's feeling of all three mixed together. Simple remedies like mineral वगैरह will have less mathematic expressions. As remedy will become more complex like plant, they can express multiple mathematic themes. So it's a complex remedy, not a simple remedy. तो क्या हुआ दवाई के बाद? क्या लग रहा है? सर्जन ने पेट खोल के वापस भेज दिया, घर में जाओ। There is an overlapping of pictures, but you can see these rubrics very clearly. Image from death of loved parents, ambitious, neglected his duty, dreams of excellence, desire to please others. Last scan है क्या? You can see the underlining को छोड़ दो, वो पिछली पीपीटी पे थी। The right kidney is normal in size and shape. No, इससे पिछली स्कैन में वो होगी आगे नहीं। किडनी में stones detect हुए थे after the prescription, and with time, this was the report. Only few lithiasis left in left kidney, and that's all. The whole cancer was gone. And I was also, on the 7th sky walk. Repetition was depending on the situation, depending on the state that came again. And this was unbelievably a quick result for me. You देखो rubrics. Illusions duty over who compared to overdoing the duty. Ailment from disharmony in family. This is Hadley, who especially worked on mammals, and you can see the rubrics. It's not कि हमने सिर्फ mental state कवर की, अरे हम proved remedy है, अभी करनी बाकी है,
सकता है कौन कौन सी पैथोलॉजीज कवर करे, वो तो क्लिनिकली पता लगेगा ना, पैथोलॉजीज ग्रुपिंग पे थोड़ी आती है। बट अगर आपने जड़ को पकड़ लिया है, why not pathological though? There is no doubt. Have faith. Affinity to kidneys, family, love hate matters. Sensation of burden, ये भाई बहनों का बोझ मैंने उठाया. Affinities to the right side. All mammals, menses before aggravating. Mostly all mammals. नहीं भाई बहनों का बर्डन पहले है, ये सेंसेशन कैसे? It's not, हम वर्ड्स में नहीं जाए, फील को अंडरस्टैंड करें कि हैदरले ने जो काम किया बड़ा यूनिक है. He has worked both on body and mind together. So that's the case number 1. Any queries? Any doubt? Doubt की मुझे लग रहा है जरूरत नहीं है. सामने है रिजल्ट. You all want to see one more case or? Huh? Next time there was one more wonderful case. We have short of time. मुझे लगा कि एक केस भी अच्छे से किया जाए. I think you guys will take back. अच्छा, don't get attached to remedies, please. अभी ऐसा नहीं कर. Homeopathy actually works on every visuality. सब डिफरेंट है ना, अलग नहीं है. किसको समझे, किसको पकड़े, किसके साथ से क्या करें, कहाँ जाए. या नॉर्मल पॉलीग्राफ देके कैंसर ठीक नहीं हो रही है, लैब पॉलीग्राफ से कैंसर ठीक हो गया. My message to all of you is, all were best for the class. Okay? आपकी अप्रोच को समझो. केस में पकड़ना क्या है? इस केस में पैथोलॉजिकल इंफॉर्मेशन was less, but the state of mind was so prominent. उसको पकड़ो. जहां डॉक्टर सेगर के रूब्रिक्स लग रहे हैं वो पकड़ो. जहां लेयर मिल रही है विजिटर सर की, don't use your single tool on every patient. Modify your tool with every patient. देखो क्या मिल रहा है केस में, उसको पकड़ो, और जो नहीं मिल रहा उसको छोड़ो. नहीं तो वो तो मिस हो जाएगा. Of course. डॉक्टर कैन ने क्या कहा? Manners are born in thoughts. सही है. बट अगर थॉट्स मिल ही नहीं रहे केस में, लेट अस से ये एक ऐसा ही केस एक और आ रहा है रीनल सेल कार्सिनोमा का, उसमें आपको माइंड हिस्ट्री मिलेगी ना. कैंसर ही कैंसर है, एडवांस लेवल. खैर इसका भी था, बंद करके वापस भेज दिया, ले जाओ घर. जस्ट जो केस में शाउट कर रही है ना जी, उसको पकड़ो. With this, I would like to thank all of you, especially to IIT, all the high table, all the thank you. God bless you.
All of us are misty-eyed tribute, but at the same time, he's so determined to walk on the path shown by his multiple contributions to homeopathy. Now, I would like to call upon stage Dr. Govinder Kochar, Director of LMH, and Dr. Sushil Saruya, Dean of LMH, to present the Homeo Excellence Award to Dr. Jagpal and recognize his compassionate life and selfless service to humanity. Dr. Jagpal and Dr. Manish Jagpal will collect the award on his behalf. Please give a huge round of applause. Now, I would like to call upon Dr. Rajesh Sopar to shower with us his immense ocean of knowledge and inspire our journey with his precious cases. Good morning, everyone. So we have a very short time. We are running late. So I will not take much of the time because I was not the speaker for today. It was Dr. Tanveer Hussein's session, but he could not come because of sudden demise of his father, and he conveyed his apologies for not being able to reach here, and he requested me to take his session. And I personally wanted to convey my tribute to my first teacher, and I got a chance. So I'll not waste much of the time on these slides, but I got the chance 2 months earlier to go to this holy place in Kothil to feel the aura of Dr. Henneman. And this you all know, Audis Apare, the meaning of this, you all know.
dare to be voice. But we all not know where to say, when to say, and how to say this dare to be voice. And tribute to Dr. Hahnemann, he used divine science word in aphorism 52, which means this is a godly science. And God is the one who gives life and birth. And He is the one who is responsible to take the life. So, but how beautifully you have seen the case of renal cell carcinoma, where all hopes of life were not there, and surgeons were not able to do anything. And Dr. Manish's medicine has recovered patient completely, and he is living a healthy life. So limitless hope of homeopathy emergency cases. This was my last lecture, and I am just repeating the same lecture because yesterday itself I got to know that I have to take some time here. I love this slide. Let's see, these are the pioneers. Dr. Kent, Will Moral Intellect, Dr. Boni Messer, Location Sensation Modality Concomitant, Dr. Alan Keynotes and Pathology. So all these masters, they use different methods, different approaches, but to reach to one thing that is pure. Patient needs only one thing that is pure. How you reach to the sublimum, it never matters. Which method you have selected, which school you have followed, that is secondary, but primary is result. And this is tribute to Dr. Praful Vijayakar sir. He said, mathematics, homeopathy is mathematics and limitless science. If you have followed the principles carefully, that is Vyasa, disposition, remedy, the cure should be there and cure will definitely come. In tribute to sir, in 1994, someone called me just to find out a homeopath in the city who consults only with appointments. I was in second year when I first met Dr. Ramakant, and that patient was consulted for 1.5 hours, and after that he gave only one dose. At that time he used to give only one dose. And I was surprised that what will happen with this dose. And after 15 days, the patient was called, and the patient was improving very fast. And later, the patient showed astonishing results. And I holded the hand of Dr. Ramakant sir, and whatever I have learned from him. How to even talk to each patient, how to learn, how to even take the history, everything, every little thing he has taught. When I left him after 6 years, he told me only one thing: only sky is the limit. With a motto that just learn and share. Keep learning and keep sharing. And I was very fortunate to stay with him in his house for 2 years. And what I used to see, that he used to complete his clinic at 8:30 or 9. And after that, he used to take his dinner and come back to his chamber and used to spend a lot of time to study the books. And same I did with Manish for 2 years, and we learned together. We shared the same bedroom for 2 years. So I'll share few cases, but as the time will permit,
only 30 minutes because this is the time of Dr. So this is the case of respiratory failure and retinopathy. Second, coma, metabolic encephalopathy. Then sudden respiratory distress syndrome. And fourth is CKD with complete heart block. This is how I proceeded in each case. Remedy, miasm, which is process of disease. PQRS of the case, target organ, perception, conformity. Case 1. Baby Jagpal born on 1/1/21 at 7 months, 12 days of gestational age, no birth right, 52 Nico, was kept on high ventilator support. She did not show any recovery in 12 days. Her parents came on the 13th day as they were told about poor prognosis and little hope about her survival. They came with hope to homeopathy with hopeless and helplessness of health. So 12 days she was on ventilator and she did not show any sign of recovery. Now you can understand that what is the cost of ICU of a pediatric or this NICU for 12 days and with no hope. They could not take or click the picture in the ICU. It is also very difficult to show the documents, especially the pictures and videos, because patient is such a pain. At homeopathy they want actually के कोई picture मिल जाए और वो वहाँ पे दवाई दे या कैमरे से picture ले, but still we need something. So this is when she recovered. So I just took the pregnancy history. Mother was not happy since she became pregnant and pregnancy test was weakly positive. Throughout pregnancy, she had vomiting. She had already one daughter suffering from nephrotic syndrome, and she thought she will give birth to the second daughter with major sickness. If it happens, what would be her life? On 31st December 2020, water bag ruptured and liver pain started and heart rate of the fetus and mother increased. So she was admitted to DMC hospital Ludhiana. Same night she gave birth to a baby girl and she was sad and depressed about it. LSCS was done. No birth cry, poor effort, tactile stimulation given, no cry, BFP into 30 seconds, birth cry weak. BFP 30 seconds, heart rate 98 per minute, SpO2 only 55%, intubated with ED, shifted to NICU, at birth over 5 to 7, no birth cry. Doctors told she is unable to breathe due to serious infection in the throat. So list of diagnosis, just have a look on it. Preterm for gestational age, low birth weight, respiratory distress syndrome, respiratory failure, extubation failure, perinatal asphyxia, shock, late onset of sepsis, bowel culture positive one, Echinobacter, pneumonia, neonatal hyperbilirubinemia, retinopathy of prematurity shows zone 2 and 3 immature, USG cranium shows grade 1 germinal hemorrhage on right side, congenital pneumonia hemangioma. In 27 years of my practice, I have just seen first time this congenital pneumonia, hemorrhage, congenital pneumonia. The baby was totally in a helpless state. So these were the reports, the same diagnosis. If you can see all these. Can we save her life, her retina, her vision? If yes, then how? What should we do? If yes, then how to proceed in such cases or cases? This is aphorism 3. I will not spend some more time. If we understand the disease, then we are able to revert. Now, what was her disease? Physiology or pathology?
etiology, timeline, preterm, disease, no birth crying, respiration failure, severe infections. But why all this happened? Why all this happened? It was actually a dead appearance. How dead appearance? अगर वेंटिलेटर उतार देते तो कैसे सांस लेगी? So ventilator is just helping her to stay in this world. So dead appearance, so many diagnoses, mental trauma, emotions, some shock, perception, understanding. But what was mother's perception? ऐसी कौन सी perception थी जिसके कारण बच्चे ने ये सोचा मैं सांस ही नहीं, मुझे सांस ही नहीं लेना, इंस्टेड मुझे जाना है यहाँ, I should die. So Organised footnote 9, most severe disease may be produced by sufficient disturbance of the vital force through the imagination and also caused by the same genes. Most serious disease can be developed just because of your imaginations. God has given us the power to fantasize. What we fantasize, how much we fantasize, how much energy we put in that fantasy. Because that fantasy is from your subconscious mind. So this is what I usually share in every lecture. You can prescribe here if it is possible. You can prescribe here on the emotion. You can prescribe on the understanding of the patient. You can further prescribe on the senses. Then you can further go deeper, which is perception. If you have understood the person's correct perception, your prescription will be rock solid. So what was her miasm? Definitely syphilitic. What kind of syphilitic? I consider syphilitic two types. One is killer, another is non-killer. Like Alzheimer, this is not non-killer. Like this Parkinson, this is non-killer. But certain miasms which are killer, like carcinomas, advanced stage, this ventilator support, this is definitely a killer miasm. PQRS, severe throat infection. Perception, mother, she would give birth to a diseased daughter. पहली बच्ची को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो दूसरी भी वैसी ना पैदा हो या कोई और जैसी कोई सीवियर डिजीज हो. टारगेट ऑर्गन लंग्स, रेस्पिरेशन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, hemorrhage in the brain, right side of the brain. So anyone, which rubric we can think of from this perception? How to proceed? She would give birth to diseased daughter. What would be her future life? यहाँ पे कदम नहीं, उससे आगे भी सोचा. Perception is imagination of future. I'll not take much time. Delicate misfortune images, which is perception. Then is second hemorrhagic remedy. Third, serious throat infection. So ophidias has sensitivity in the neck. So remedy given was Naja-1 local application. And what they asked me, what will happen with this medicine?
And I just told if my medicine is correct, within 24 hours, she would be out of ventilator. They were confused. Doctor, वो 12 दिन से ventilator पे है, ये 24 घंटे में कैसे होगा? मैंने कहा, but if remedy is correct, she should come. Within 24 hours, ventilator was put as she started breathing normally, and in 4 days she was discharged from the hospital and brought to my clinic. So they are telling the same happened within 24 hours. So she was out of ventilator, and within 4 days she was discharged and was brought to my clinic. But still, parents were worried about her retinopathy because the retina was not completely developed. In 6 months, she started getting normal vision, and now she has perfect vision 14 inches on the scan. The sound is not there, but the baby is completely normal. She had no issues. She has never taken any medicine except that Naja 1M, which was locally applied and never given even internally. So Naja, fear of misfortune, 104 remedies, which is psychosis, and then during of that misfortune, psychosyphilitic, fancies of misfortune, only one remedy, syphilitic, delusion, images, misfortune of possible. Naja is one drug which just tries to see the next and that too in a negative way. Any complaint about throat mortem or swallowing, first thing that rule out of India. The constrictions extend from throat to rectum, constriction, sensation in throat, all snakes are there, constriction of pylorus, stomach, sore clothing aggravate, constriction, closure, contractures, lacuses, constriction, sleep during only lacuses, swallowing, lacuses, constriction of lacuses. So, a very short case, next. Daughter of the patient called from Amritsar that her father is in ICU who has been on a temporary pacemaker since December, age 22. Without a pacemaker, heart rate decreases and they want to permanently implant it. He also suffers from chronic renal parenchymal illness, acute pyelonephritis, and sepsis. Creatinine level increases. Doctors wanted to start with dialysis and then implant a pacemaker, but sepsis rendered them helpless. He has fever, abdominal ache for the past 3 days.
He wanted me in stool, lost consciousness, and stopped breathing on December 8. He had a hospital admission. He has one son married who is in Canada. His wife and grandson lived with him. His daughter was quarreling. She used to abuse, hit him, and used to call police in March 22. She went to her parents with his grandson and never returned. In ICU, he was wishing to see his grandson only. List of diagnosis: complete heart block, acute or chronic renal failure, sepsis, left acute pyelonephritis with renal papillary necrosis with hydroureteronephrosis. This patient approached from Amritsar with a complete heart block और वो ये बता रहे थे कि अगर पेस मेकर की वायर भी हिलती है तो उसका हार्ट रेट डाउन जाता है और वो सेप्सिस के कारण पेस मेकर इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे और उसकी रीनल फेलियर के कारण, लेकिन वो दोनों ही कंडीशंस के कारण उसका डायलिसिस भी नहीं हो पा रहा और क्रिएटिनिन वाज मोर देन 8. This was the patient. Again, the same I approached. Miasm syphilitic cause indignation, suppressed anger. Perception resulted for second. Target organ here is heart and kidneys. And rubric selected ailments from anger vexation. Delusion resulted for second and complaints of the heart. I am moving fast because Dr. Matharu is waiting and I have been given only 30 minutes. So remedy given was Aurum Metallicum 1M, local application every hour. Now what do we expect here? Patient ICU में है, उसको पेसमेकर लगाया हुआ है, वो इम्प्लांट करना है. What do we expect with homeopathy? क्या होगा? रेमेडी भी सिलेक्ट कर ले. And they approached only me कि भाई सिर्फ सेप्सिस ठीक हो जाए तो उसका पेसमेकर लग जाए. सिर्फ आप सेप्सिस ठीक कर दो, उसका जो है फीवर ठीक हो जाए तो पेसमेकर लग जाएगा, उसके बाद उसकी डायलिसिस हो जाए. So what is our expectation with homeopathy? Anyone? हमारा गैस पर क्या होना चाहिए और क्या होगा? पेसमेकर की नीड नहीं रहेगी, वो कैसे छोड़ देंगे हॉस्पिटल में से? कैसे छोड़ देंगे? On 12th December, pacemaker was removed because heart started improving. 14th, creatinine came 7.7, urine normal. Then patient was discharged without surgery. Dialysis and creatinine was 6.2. 3rd January 2023, he visited my clinic and his creatinine was 5.2. And just see these reports. 12 December 2022, left renal papillary necrosis with mild left hydroureteronephrosis. And 13th November, just few days earlier, left kidney is normal in size, smear, the cortical thickness is normal and echogenicity is increased, no calculus and no hydronephrosis detected. Necrosis disappeared. 1 साल से बंदे का ना डायलिसिस हुआ है, ना पेसमेकर लगा है, and patient is totally gone. And this is, he comes to my clinic every month. Last time he visited his son in Australia. He is not taking any medicine except the diabetic antidiabetics, which he is suffering since 20 years. Necrosis gone, heart is totally normal, no pacing.
1-year boy suffered with respiratory failure for which he was admitted in ICU and put on ventilator in USA on 30/1/23. Was passed at all. There was no improvement after 24 hours, so his mother contacted me. This is the baby. Patient is in USA and they contacted. Uski 6 saal call आई and then I asked what is the. This was the condition of the baby. 1 day earlier he suffered with cough, vomiting, but no fever. Second day he suddenly became breathless. He was brought to hospital. He was nebulized and sent home. But after a short while, his breathing got worse, requiring his parents to bring him back to the hospital to be put on a ventilator. Again, the same steps I used: MAHAVIRA syphilitic collapse, PQRS. I have seen the video of that baby. The jerking respiration, target organ, lungs, respiration, medulla oblongata. Next day, his ventilator was removed and he was only kept on oxygen. I prescribed one medicine. I told this medicine should be applied to the patient, but they asked this is in the hospital. I told them कि इसको अप्लाई करने के लिए नर्स को बोलो चर्च से होली वाटर लेके आए, and they applied. And next day the baby was out of ventilator. This is follow-up. Third day he was discharged from the hospital. Total normal. Collapse sudden and respiration jerky. Which medicine I would have given? Crotellus horridus. Crotellus horridus, 1 ml, local application every 1 hour has completely cured that. So with all this, I am just finishing. I cannot show this case. This is what the meaning of Odes Hepari is. We cannot say, we cannot use these words, dare to be wise, but our cases should speak that what is the difference between allopathy and homeopathy. The patient should convey this message to the allopaths that where they fail, where they stop, where they don't have any chance, where they don't have any hope, every homeopath can give this type of results, and patients will convey these messages to the. Thank you very much. Thank you so much, sir. We are so glad to be able to learn from you and your experiences. Now, I would like to call on stage Dr. Naresh Verma and Dr. Rajesh Mahajan from Amritsar to honor Dr. Rajesh Verma. Now I would like to call upon Dr. S.S. Makharu,
so that we can learn from him since the morning we are so eager waiting for him to take the session. Please welcome Dr. Iihp Punjab with a huge round of applause. Hello.
Hello. Am I audible, please? Good evening, everybody. First of all, thanks Iihp for learning and sharing our experiences. Dear friends, I am not a teacher, not a speaker, just a student of homeopathy. There is experience in my private clinic which I will share to you. Behind this idea, the sharing of thoughts, the very good process in application of homeopathy. We learn from our teachers, our key teachers, Dr. Shofan Saab. They explain very, very beautiful pieces. But if sharing lacks, then we will deprive of this knowledge. With this idea, I want to share some practical but very little cases just to explain what homeopathy can do. Dr. Sehgal
master of my therapy, he give room for and create a revolution in homeopathy. He said in his teachings, just only usual symptoms, very ordinary symptoms, can guide us to the full remedy, the simillimum. By using these things in my practice, I would like to show you how usual things to the top of the patient, the common language of the patient during sickness. We are right. ऑनलाइन नहीं है मेरा कैमरा Very simple case, very short cases. इनको करते थे ना कर लिया इन्होंने पहले कर लिया लेके गई तो इसको ब्लूटूथ से जोड़े ना उस वाले मेरे वाले से सेटिंग से जाओ ये ब्लूटूथ ऑन इट्स याद आ जाएगा ये रहा याद लेके आते Or conscious patient done her attendant took this patient to my clinic and just उसको निकाल रहा हूँ वो ले लो put on waiting and called me, sir, it's unconscious. Can you do something? I said, I tried myself. So, this is the conscious. He was suffering from dengue and was admitted to a private hospital. From there, doctor advised him to take to the higher hospital for further treatment because her platelet count was so low. It is in the ground. He come to me because he has learned that there is successful treatment in dengue, in acute cases, in homeopathy. We have achieved the target. Nowadays, we refer homeopathy in emergency cases also. See the achievement of this system. Due to lack of sound, I cannot really the language of the patient who chose, but just explaining. We are referred to the homeopathy that we are very poor. We have learned to can help us. This is the first picture. I will not waste the time because a lot of thoughts are to be shared with you. See the next picture. After taking the just after 15 minutes, I usually put the medicine after he is taken and just ask the patient to just wait for 15 minutes because within 5 minutes of medicine improvement should be there. Within 5 minutes, there is no medicine drop. So I done.
Then see the third is started. She's saying something better. This is the only medicine was given to the release. I think that's that I will do better. This was a very short piece. Today I will share a very short First of all, the patient was unconscious with fever. She was high fever. Very simple to say. Don't worry about the situation. Just observe what is happening. Patient was unconscious. Who can take the unconscious? Because I know this much. Therefore, I am saying what unconscious, fever during unconsciousness, fever during. Of mind, muscle used to obey the will, held to desire. Unconsciousness you are watching in the video will not spot the will. She was not able to hold herself. Put on the table. It's one help. Before coming and cancer, her husband told me, sir, she put her whole pain on me. The tolerable condition and patient desire patience. This is on the physical level, but we also observe in our clinic, in mental state also, baby held that. If someone is talking to pleasantly, to want to hear that pleasant thought, this is again also help design to be, because you are being held with this thought and with the one small other person. I will not try to explain more about this because in short, I have to explain when in your place you will Gershinium 30. Only single dose of Gershinium 30 recovered this patient within 35 minutes. Try to apply
in your practice, nothing is incurable, I think. Because lacking is there in ourselves. When there is lacking in our understanding, our observation, then we feel. In next simple case, don't shut because all the songs are coming from outside. This patient also referred he's in a waiting area. All the family members are there. And since our please let us, can you make him better? My speech to go to the other hand, I came from my cousin to see the patient in the room. What is happening and the behavior of the patient. Dr. Sehgal says, just see the present predominating symptom and persistent. How he says, why he says, when he says. These are the most important aspects of the Sehgal technique. I have little knowledge about the method. Whatever a drop of knowledge from the ocean of knowledge master Sehgal, I thought that I have shared with you. The next video after putting is quite now responding to the medicine. I said, don't worry, patient is on the recovery. There is problem of sound, otherwise very interesting. And next, he came into my cabin that the meeting hall. I have not this much time because we have very little time. I have to share many things with you. Next. We will go very fast. Then next. In competition, all you are seeing is line lap of his mother and with the rest and ease. Next is sitting front of me in my travel and saying, I feel much better. It seems I want to go to my room, please let me go. Give me the further medicine. I just want to go. And let my clinic peacefully. The
highly disturbed case was being positive. While case taking, there are very little things, very minor things, which we have to take in consideration, not to be ignored. Usually, we ignore the usual things of the patient. And very short time. Again, I try to explain how very human come and become fruitful for us. Only very simply, just issue was saying, this is the first video you have noticed that it was I would show that advertise so much. This was the language of the patient. Then I took the first symptom here on. Very simple, very simple. This is part of it. Prepares when you go to their clinics. Don't worry, we are with you. Something to tell you all. Our science is very great science. Proud to be a homeopath. We will compete with our modern medical science. That's don't worry. Homeopathy is dying now, but we will try to save homeopathy. How we can say with results? Everything is a result of reaction. When we show the result to the public, to the patients, patient will recognize us. Then after that, when patients are recognizing you, no need of any, he can stand. With the passage of time, we will be recognized by the common council. Carry the actual past, but please do something, please do after the time going. That patient was seen. Fear death of heat during. Very simple to place, very simple things which we can observe and apply in our patient. And which we would do. Because the patient was having 100 times. I give you accurate 30 without repetition against the video. Here, accurate can help with. Help with the last video showing you the action of 30. We will take off this and that with accurate 30 and land with accurate. This is the first video. The next video is some of my patients came into my clinic. There was a number of patients sitting outside in the waiting room, but she rushed to my clinic saying, "Sir, please listen to me. We are in emergency. My father is sitting outside your travel in your waiting area. We have not told him that his platelet count is 1,000. Platelet count was 1,000.
I said, the patient said we are referred to PGI, but we don't want to go to PGI because already we have left the PGI. We went to the PGI when the platelet count was 1500 with 1100, also 15,000 with 1100 years. When we admit our patient to the PGI, we started by solo 30 milligram dose for a week. Patient recovered very well and got 75% of platelets. We stayed there at night because PGIs are away from our house. Tomorrow morning, while giving the PGI, we just decided to just see our count again. We tested the platelet count was 40. Patient was admitted to PGI with 15,000 platelets and raised to 30,000 platelets with visolone 30 milligrams. Then we withdraw the visolone, platelets is down to 40,000. And sir, what we come to? Call home the house of the patient. What is the condition of the patient? He said to their house family members that the platelet count down to 40,000. He said, in Turi, in our native place, there is a homeopath who gives the medicine. The platelets count are raised. This is the notion of the general public. Platelet counts in every case cannot be raised. There are many reasons for that. But patient don't know. Patient know only this much. Again, responsibility becomes a very big responsibility for system. Came to me showing this video. So we have not been our father. Then patient was admitted to the local hospital with 14,000. Before coming to me, on the 14,000. Tomorrow morning, and Dr. C, the result, the platelet was 1,000. Then he immediately referred the patient to the CS. There is a report of the patient and referred slip also. Then I said the patient that please take this patient to my clinic, into my cabin. He very surprising thing, I asked the patient what is the problem. Then he big spots, blue spots for because the hearing was started. And the outer canine was also blue. And blueness of the I asked the patient, what is the problem? Doctor, I feel very much headache. We have learned, we have heard from the people that he can stay. My family took me to you. But please kindly let me know. Can you see? It
may not happen. The stage you are creating, then something happens. Can we believe on your prescription? It is a great dispensing moment for a physician also. What will you do? I gave a dose to the patient with some other history because sound is not there. You could listen, the voice is very well. Patient said, he can live. It may know what happened. I did not income. Sir, sometimes ago, few years ago, I was suffering from dengue. At that time, I came to you. You saved me at that time. I hope you will save. In very short, I will try to. This is very short. This is the first report of the patient. The care count was 1,002 points. This is the first. After taking the medicine, yes, one thing which I told to my patient, please give me 2 hours. You take this medicine and proceed for CMC because anything happened to the patient, I will be responsible. Without wasting the time, you can go here. After taking the dose of the medicine, patient is sat into my waiting hall. After 10 to 15 minutes, patient gone for a watch. It took 2 glasses of water. This is a positive indication for us because whenever you see any patient, examination and elimination is done. When this process starts naturally, then this is a very good junction point. The natural parameter should go up, should settle. After that, again, a dose was given, same dose. Then patient demand for choose. When you came, sir, yes, law is be law. It now stuff. Hence, when I comes after 35 to 40 minutes, patient came to my travel. He said, "Sir, this the obstruction is released. Giving for juice. 1.5 grams of juice. I was sure my patient is going to recover. Our master said this much knowledge because see the general parameter. Your other parameters will come later. I used to practice. After putting the dose into the mouth of the patient, within 5 minutes you will be able to notice the positive changes in the face of the patient. Taste of the patient just after 1 to 2 minutes will change. Don't go after
other after 2 hours, patient gave me time, and his son also told me that, sir, we are staying with you. So the patient is better, slightly better. I said, please do again investigation. Please do the CPC again. I will not take the risk. After 2 hours, the CPC was done with 12,000 platelets from 1. Again, patient settled down. He go to his house. On the tomorrow morning, I think it was 14th of October, I think. I had to go for the BRSO medical college in Delhi to share my thoughts. I go there one day before because of the distance before. And tomorrow morning, this was the count. This is the platelet count was tomorrow morning 38 outlets. With WBC, 554. With good health. Then again, in the evening, as per the Iihp Punjab, with 51% from 1,000. We have started the journey from 1,000. 1,000 platelets received in 3 the right faculty. Now, a very simple case. I think the other slide is missing here. When I was just started, I was to start my speech. A message came to me. It is, I think, by on 15th of October, after 3 days, platelet count was 1,70,000. Very much okay. This was the case of Lactasis 30. I give you Lactasis 30. Show you the that you can see result. These are the symptoms. Consideration. First of all, CTS. Patient said, so some people are from you being benefited. This type of disease. So first is here's the thought. Here's something of
covered, I went out of the board. You see, here's something wrong. Cautious. Can you make it better? Is that not anything? Ask me. This question is cautious. He is very much cautious of it. We are detailed of things. I mean, recover the doubt is easy. Objective is never. Patient told me some years ago, I went to the treatment, that time I was objective reasonable. It was reasonable. I was being, therefore I access to the patient. With brilliant result, one more case, but I will not explain that case today. This is the last, you can say, recovery from 1,000, but 2-3 years back, when we recovered the case to 2,000 treatments with 1,100 TMs. That case was suffering from HIV positive, and this was referred from many hospitals. In great patient he was. Look to me. And final information, I will not explain that in the detail. After 1 year, his HIV was negative. HIV is negative. I have reports from many, you can see that. We have picked up many times their test. With breakthrough health, he was become dead. So, next case. We are having 42 delegates online. We are saying just try to speak in Hindi. Audience has no problem. Can I speak in Hindi? Doctor, please, just I want to speak in Punjabi. I know very little knowledge about English and very little knowledge about Hindi also. But due to the demand of the people, because 42 members are online from the abroad, Iran, Switzerland, many other countries also. So the patient इस condition में मेरे पास आया था, और स्टेट से भी हमारे साथ हैं, and I would like to speak in words. पेशेंट ने बोला था कि भाई मैं मर तो नहीं जाऊंगा, आपकी दवाई काम करेगी, कि ऐसा ना हो, ऐसे काम खराब हो जाए. This was fear of being betrayed. These are the very common, you can say, usual symptoms in stress patient state. हर बीमारी की दशा में जब कोई आदमी बीमार होता है, तो उसको लगता है कि सर आप ठीक तो कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए. जो ये वर्जित बीमार होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी, दिस इज द fear of being betrayed. तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी सर, दिस इज द fear of being betrayed. There are many versions, but we will try to again explain. अब इस मौका मिला तो बात करेंगे ये एक्सप्रेशंस, कैसे हम कॉमन यूजुअल एक्सप्रेशंस को अपनी प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल से एक्सप्रेशन जिनको हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो हमें सिमिलर माउंट मिल जाएगा. नेक्स्ट केस में बहुत सिंपल के साथ, सॉरी आई डोंट वांट टू sorry
पेशेंट, ये जो बच्चा है पूरे छूट था उन दिनों में, जो भी लैब के बारे पास वो 5-6 लैब से हो रहा है और हॉस्पिटल में एडमिट था और इसका जो प्लेटलेट्स काउंट मेरे पास इसके फादर ने मेरी शिकायत दी थी जब साथ बच्चा ये फर्स्ट इसका है, आप इसकी लुक देख रहे हो कैसे होती है। इसके फादर दूध में आगे गिर गया, इसके मामा जी जैसे I will not waste your time because we are very much short time. So then I will sit down to class. After 3 days, patient came, he's talking, speaking well, and saying, platelet count shows 373. 373 platelet count was after 3 days. This was the very good result of homeopathy, depending on the mindset. I'm not saying this is the only way, but this is the way. You can choose, you can use it in your practice. ये कभी आप हम पेशेंट की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो कॉमनली पेशेंट के बच्चा इसके फादर ने मेरे को बोला, सर जी आप मीठा देना चाहते हैं कि ठीक हो गया, हमारे घर में खुशी आ गई है। तो ये जब ऐसे कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमारे लिए सम्मान की घड़ी हो जाती है। मैंने इसको क्या किया, जस्ट उदरसिस स्ट्रॉन्ग सके इसी बात पर that I am feeling pain in my body. जब भी किसी को पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है, आप मुझे बताते हैं। पेशेंट कहता है अब इंजरी पे क्या है? ये कंपनी का weakness हो गया है, and having not that much energy to pump, चला भी नहीं जाता। फ्राइटेंड ईजीली डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट था तो डॉक्टर ने बोला भाई ले जाओ बड़े हॉस्पिटल में, तो उसने पेशेंट बच्चा डर गया एकदम। क्या मैंने पूछा, बच्चे आपको क्या प्रॉब्लम है? Just you let me know what the actual problem you feel. He is certain. Strongly working that patient is very, very, very good. Patient आपको कभी मीठा देने आए, समझो वो पेशेंट खुश हो गया। Otherwise वो पेशेंट मीठा नहीं देते।
हमारे पास आया था इसकी साइड में हम आपको इसका सुबह 8 बजे टेस्ट हुआ था पॉजिटिव आया this was the very simple and difficult जो भी है आप इसको थोड़ा पढ़ाना नहीं आता बताना क्या in simple case they put out the code because specifically for the video and concept of the video ये पेशेंट मेरे पास जब आया था इसका एक क्लियर सेट लेवल 6.5 volts after few days, I think maybe 20 days. 20 दिन के बाद 636 इसका लिखा हुआ वो ठीक है इसने टोटली डायरेक्शन बंद कर दी 3 महीने से अब मेरे पास है तो इसका अगर रिजल्ट आपको आई थिंक 2.5 और मे बी 3 months 3 महीने के बाद के लिए पेशेंट इज टोटली weak with totally normal PSS इसकी एक और उस समय के बाद इसको पेशाब बंद हो जाता ये लड़की है अबाउट 43 years इसको ऑपरेशन के लिए रेफर किया हुआ था से क्योंकि बार बार जब भी इसको दिक्कत आती थी 1 महीने बाद 2 महीने बाद तो इसको आर्टिफिशियली को डायरेक्ट किया जाता था उसको यूरिन एंड पेनफुल प्रोसेस बहुत बार ऐसा ही हुआ इतने सालों से ऐसा हुआ
लास्ट में उसको रेफर किया गया था हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए। पेशेंट ने बोला कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा और ये उसके फर्स्ट सेल उसमें एक बुक है just now. एक महीने में पेशेंट को वैक्सीन देने के बाद ESS लेवल और फर्स्ट सेल वाला सबसे बड़ी बात पेशेंट को पेशाब की दिक्कत उनके साथ आपने तो देखा कोई दिक्कत नहीं है फिर आप पेशाब हो ये उसके सिस्टम पेशेंट ने बोला कि सर बहुत तकलीफ हो रही है, बाथरूम नहीं हो रहा, पेशाब नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ में रहती है। मैं वो ऑपरेशन बार बार नहीं करवाना चाहता, मैंने बहुत दुख पाया है। एक बार जब उन्होंने सिलाई से दूसरा को खोला था पैसेज को और मेरे को इन्फेक्शन हो गई बहुत खराब और मैं नहीं जानती थी मेरा बारे को बहुत तकलीफ में है पेशेंट और दूसरा था बहुत तकलीफ है इंजरी और फिर से वो करेंगे तो वही से होगी मेरे से सहन नहीं हो पाएगा। बाहर टेस्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर से बोला कि भाई आप फिर से हमसे कैचअप करवाइए पेशेंट पूरा सर पता नहीं कौन से क्या बता देंगे बस ना करवाइए कुछ भी मैंने खाया मैं उनको दे सकता हूँ सारे पेशेंट को जितने टाइम नहीं तो फास्ट चल रहा है ऐसा लड़की ने कमाल का जड़ किया ये सेक्टर हेलो वेरी गुड कंप्लीटली कंप्लीटली Are you comfortable in this type of learning, this type of sharing thoughts? So I have no experience about this. तो पहले जो स्लाइड बनाई थी उसके साथ इंफेक्शन हो गई पूरा हाल कर दिया तो क्यों लॉन्ग हुई डॉक्टर के पास क्यों जाता है पेशेंट हमारे पास आने से पेशेंट को बढ़ गई तो
पेशेंट को लगता ही है कि भाई मेरे साथ गलत हो, ये फिर ऑफ इनफेक्टेड कि मैं अभी दवाई नहीं कराऊंगी, हो सकता है उससे ज्यादा भी नहीं राइट वर्ड टाइम मैं उससे कोई टेस्ट नहीं करवाना, अंदर से मैंने चेक नहीं किया, मैं कोई टेस्ट भी नहीं करवाऊंगा कहीं वो ऐसा कुछ ना इससे पारी में ये क्वेश्चन फर्दर should we proceed further? Is there any question about this case? Again, the case of breast tumor, spectral cancer. Patient was admitted to cancer hospital. He advised our operation biopsy was which was pregnant by the patient came to me. सर ये 5 बन गई है, बस इसको ठीक कर दो, अदरवाइज सब ठीक है। और सर मेरा इसकी वजह से आप जनरली देखते हैं कैंसर केसेस में इसका कारण सर मेरा चेहरा एकदम ब्लैक लग रहा है कि मेरा चेहरा ब्लैक आलस नहीं है से ये और धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि अंदर का एनर्जी लेवल वो डाउन चला जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। इसको हटा दो ना, ओके हम हटाए कोशिश करेंगे हटाने की। नेक्स्ट after 1 month, sorry, after 20 days, the size of the tumor from this side, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी और ऊपर उठाई, तो पेशेंट खुद बता रहे थे कि सर यहाँ से नीचे जो हार्डनेस थी वो कम होनी शुरू हो गई और जो ब्रेस्ट अंदर चला गया था, सूख गया था, वो उसका फ्लैश बनना शुरू हो गया। थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे जो सूखा बनता वो ठीक होना शुरू हो गया और ये ट्यूमर भी ठीक हुआ। ये उसके पेशेंट के बोला कि सर ये बस सिर्फ यहाँ पर ही गए, ऊपर से ठीक होके नीचे हो गया। ये ऑलमोस्ट 75% रेट हो गई। पेशेंट कह रहे हैं मैं लैंग्वेज सुनाता हूँ आपको, सॉरी वो आवाज नहीं आएगी। पेशेंट बोला कि सर मैं तो बहुत ही ठीक फील कर रही हूँ, अब मैं छोड़ दूँ? अरे भाई इतनी थोड़ी ब्रेक हो, कुछ दे दो पैसे, हमें भी तो चाहिए कुछ। वो सेटलाइट इसलिए रखी हुई है वो मीठा करने के लिए, हमारा भी होता है ऐसे। ये देखिए टोटली कवर्ड विद ब्रेस्ट साइज नॉर्मल, तो सूखा हुआ साइड में लग रहा था, मांस अंदर चला गया था उसका। ये एनाटॉमी है, नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द ब्रेस्ट। अब पेशेंट को सुनाऊं कैसे आवाज, अब उसका चेहरे देख लीजिए थोड़ा कैसे लगता है। ऐसे खुश मिजाज में कैंसर वाला पेशेंट कब बात करता है, जब उसको कुछ ठीक सर बहुत अच्छा हो गया, अब दवाई कब बंद कर दी, भाई वो नहीं हम बंद करेंगे, हम 6 महीने और चलेंगे आपके साथ, ऐसा कुछ बंद कर सर
हो गया है ना ठीक, हो गया है ठीक, तो कोई क्या अब इसलिए झूठ बोलना पड़ता है थोड़ा सा। कोई पेशेंट तो नहीं बैठा है झूठ बोलना पड़ता है, क्या करें, झूठ नहीं है भाई। अगर आप दवाई ज्यादा नहीं खाएंगे ना तो ये बीमारी फिर होती नहीं है, पता है ना कि एक ही रोज होता है। रिकॉर्डिंग कहीं पेशेंट हो जाएंगे तो कोई नहीं आएगा, बोलेंगे सब झूठे हैं, सब झूठे बैठे हैं, एक ही पूजा देते हैं, एक से ठीक होता है, आपकी सब ऐसे ही है, सबको पता चले तो रिकॉर्डिंग का जो नुकसान भी होता है कोई बात नहीं है, हमें भगवान और देगा। तो ये तो हमारा बेस्ट और एक और के साथ शेयर करूंगा। अच्छा हाँ, इसकी बात सुन ली, मैंने सुन ली, आपने नहीं सुनी, उसको वैसे मैंने संपर्क दिया तो मैं आपको उसका वो बता एनालिसिस बता रहा हूँ। मैंने संपर्क 30 दिया था पेशेंट को और विद द सिंगल डोज ऑफ 30 पेशेंट रिकवर्ड। बाकी मेडिसिन का आंटी चाहिए क्या है, 6 भी है, 30 भी है, multi-bottles of cyclic use things are body पूरी दुख रही है, most important thing commonly used treatments बस इसको हटाना है, हटाना मीन्स रिपेल करना, मूड रिपल्सिव, इसको हटाना, बाकी सब भी अच्छी लगती है, मेरी बहुत अच्छी लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I sleep well and do my work, no problem. But just nothing is good. Delusion imagination of पिछले बोला था ना, तेरा भी थोड़ा सुनता है, अंदर से बढ़िया गान चले गए हैं, और इंटरेस्ट एकदम ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके लिए ही है, इंटरेस्ट नहीं, वो उसने मेरे बोला था, delusion imagination of, इसमें भी कुछ बातें करने वाली है, वो बात टाइम नहीं है, इमेजिनेशन तो है, delusion में तो बात करें कभी समझ नहीं है, लेकिन तो जरूर delusion imagination of, delusion is getting, everything is going down and down, अंदर से मैं डर रहा हूँ, अंदर से कुछ ना कुछ सा हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि ऐसे बढ़ती ही जा रही है, शरीर गिरता ही जा रहा है। In our language, we use this delusion, thing is getting, तो सब बात कीजिए, सब की बात totally okay. और हम cases are there, cancer, they were the child was admitted to the Lmhmc hospital, and she was recommended for diagnosis. Very simply, if cancer came into my mind, just share my moment. She was admitted to that hospital, and she said, operation is not possible because cancer has been so from left to the lateral area. There was no pain. About nothing or third action. It was very painful. She was taking 2-3 tablets of morphine daily. 4 to 5 hours. Pain relief हो ही नहीं रहा था. There is no contact with the body. पूरी आगे चली, दिल्ली से पूरी एकदम. Just बोले साहब कुछ हो सकता है. उसके शो में मैं खास करूँगा 0-1 की बेसिकली टोटली फ्री ऑफ मॉर्फिन. उसका यूरिन बंद हो गया था, उसका पेशाब बंद होने के बाद उसकी पैरेंट बात हो गई. डॉक्टर्स ने इसका रीजन बताया कि जो कैंसर है वो इतना ज्यादा डेवलप हो गया है कि वो
इसका जो उनका साइज है वो कम हो गया, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा, तो वो कोई डिसीजन नहीं करना। अब क्या है, शी इज पासिंग स्कूल डेली with no problem, she is passing during rubric में कहूँगा intolerance of pain, intolerance of complaints, irritability, irritability, ये तो वैसे ही केस नहीं होता है, आज के हम नहीं चाहिए बताने का, इसको डिटेल में बात करेंगे जब हम इस प्रोग्राम कंप्लीट क्यों हो जाएगा, वो क्यों नहीं होगा, बस जस्ट हमने उसको स्ट्रेस से बाहर पेशेंट को आई हो, ये कोई छोटी बात नहीं है, मॉर्फिन को हमने रिप्लेस कर दिया नक्स का 0 से, एक डोज एक ही बार हर रोज, अब देखते हैं आगे क्या होगा, कैसे होगा, शेयर करेंगे आपसे। तो एक और छोटा सा केस शेयर करते हैं आपके साथ। एक सिंपल केस पहले करते हैं, छोटा सा। एक पेशेंट मेरे पास क्लिनिक में आया, सामने बैठे लोग से खांसी कंटिन्यूस, वो मेरे अंदर आया, वो हमारे जो सीएमओ साहब है उनकी भाभी की मेरे पास साइड बोला, डॉक्टर साहब मेरी खांसी ठीक करो, बस इतनी जल्दी क्यों? सब खांसी की जल्दी नहीं है, पर खांसी होना बहुत अच्छा है, क्या खम 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 करे जा रही है, जैसे पंजाबी में बोलते हैं क्यों खम खम रही है, बैठा नहीं टेके थे पेशेंट को बोला है कि सर बस मेरे को मुझे ऐसे हुआ तो ठीक हो, जस्ट वेरी शॉर्ट केस, 2-3 मिनट्स आई सॉल्व दिस केस, और खांसी कब से थी, कब से कम 15-20 दिन पहले सब कंटिन्यूस का बहुत हाल हो गया, तो वो पेशेंट मेरे पास जब कैबिन में आई तो मैंने इसको एक डोज दी, सारा क्या किया समझ आ जाएगी, तो आपको गिव वन डोज आपको 50 मिनट्स, इस बार गिव 50%, शांति आ गई, ये ट्रांसलेशन शांति आ गई। तो भाभी जी ने भी बहुत मेडिसिन दी थी पहले, एंटीबायोटिक्स, एंटीडायर्स, पता नहीं पेन किलर, शुगर जो भी है, आई एम नॉट नॉलेज अबाउट दैट, जो भी दिया होगा उन्होंने, फ्रॉम 8 to 10 days we didn't cover, तो ये छोटे-छोटे केस में आपको बता रहा हूं, लोग क्या कहेंगे सर खांसी जाती है, ये तो आप खांस रही है, इसको ये इंफेक्शन करवा रही है, बड़ी लोग बोलेंगे क्या कहेंगे, मैं कहूँ कर रहे हैं, ये फर्स्ट टू एक हियर ओपिनियन ऑफ, ये ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे घर में छुपे पड़े थे, माइंड रेपर्टरी, माइंड सेक्शन में, but unluckily one ignored, not given preference to this. आपके सामने है कि ये छोटी छोटी बातें माइंड कितना काम आ रही, क्या क्या हमारे केस कैसे ठीक हो रहे। Really, I am very much happy to learn selling system, कि मैंने वो कमाल देखा जो कभी मैंने सोचा नहीं था, तो कैरी दैट इन फास्ट, अभी ठीक कर दो इसको, जल्दी जल्दी ठीक कर दो, बहुत बुरा है, बस इसको छोटी सी बात, सभी पेशेंट ऐसा बोल सकते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, और कभी फिर मिले तो मैं एक्सप्रेशन शेयर करूंगा, ये एक्सप्रेशन ये कहता है तो ये, और 100% रिजल्ट ये हो ही नहीं सकता, मैंने खुद देखा ऐसे, बिकॉज वी ओल्ड स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथी, लर्निंग होम्योपैथी फॉर 4 years, I conclude this.
wood pulse. Arsenic pulse we have to that ready. She is quite छोटे छोटे केस। अब हम एक और बड़ा केस करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है पर काफी बड़ा है। ये भी ऐसा ही केस है आर्सेनिक का। वो लेडी मेरे पास आई, बोले सब give me some medicine, I want to be. I took a medicine. My house is suffering, my kids are suffering, I have to do a lot of work in my house. I can't spare them. This was the language, this much. On this language, I prescribe arsenic. How I prescribe arsenic? मैं पेट नहीं सकती, समय नहीं है, मैं पे नहीं जाना चाहती, समय नहीं है, कैसे जाऊँ? बच्चों का खाना, बच्चों को तैयार करके तोड़ना, हस्बैंड जाते हैं जॉब पे, उनको भी मिलना है, I can't spare. तो मेरे को आप जल्दी ठीक कर दीजिए, बस मैं बेड पे नहीं पढ़ना चाहती हूँ, बस मैं तो बैठे बैठे थोड़ा मैं चाहती हूँ मेरे को बताए ना, बस मैं थोड़ा आराम से बैठना, कोई बात ना। इतनी कॉमन भाषा पेशेंट हमें देते हैं, और ये छोटी सी कॉमन भाषा में हम कितनी बड़ी कमाल कर सकते हैं। शेयर गोज टू अवर डॉक्टर कि उन्होंने कितना सुंदर हमारे सामने दिया। This is the way we can enter to the case. एक सरल मेथड हमें सामने दे दिया। Grateful to that great master. हमारे टीचर्स ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। डॉक्टर संजय सैगल सर, डॉक्टर दिनेश सर, the best inputs for our teaching. ये उन्हीं की शिक्षा से संभव हो पाया जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे से और ज्यादा अच्छा तो कर सकता, क्योंकि it depends on the capacity of learning and capacity of working also. With little capacity of learning and working, I will show you my work. Arsenic again, very much sharp practice. It's the common, very common language. हमारे पास किसी में घर पे नहीं जाना चाहती, मेरे को बस आप ऐसा ठीक कर दो, मेरा परिवार बच्चे, मैं काम करना है, बस मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ, शांत से हो जाऊँ, उनके बैठ जाऊँ, बात करने को मन नहीं करता, बस मैं इसे दे दीजिए बच्चे, तो पास थोड़ा सा समझने की कोशिश हम करेंगे इस चीज को, बहुत कुछ नहीं है। एक ब्यूटीफुल केस, और वेरी छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं पहले सब एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, ताकि हमारा टाइम मेरे पास बहुत कम है, मैं और भी कुछ बात कर सकता हूँ आपसे। मैंने चिकनगुनिया के कम से कम इन दिनों में 100 से ऊपर केस ठीक हुए हैं, एक महीने में 20-25। ये पेशेंट मेरे पास आए अपने हस्बैंड के साथ, तो इसका एक्सप्रेशन था ऐसे, फिर है ना आपको मेरा बात ऐसे, तो बेटा आपको बहुत क्या हो रहा है? सर बस मैं तो ना तंग आई हुई दवाइयां खा खा के 10 दिन हो गए मेरे को तकलीफ झेलते हुए, कोई राम ही नहीं पड़ रहा, दुखी हो गई, मन भर गया, और क्या लगता है आपको फीलिंग, बस ना यही मेरे पास होनी चाहिए, बस उससे मेरे पास मन करेगा। उसका हस्बैंड पास में बैठा, भाई यही क्यों, तुम्हारी सास क्यों नहीं, और सास तो किसी को भी अच्छी लगती भाई, और मेरे को खुदा के साथ आपने घर पर पूछ लिया, हाँ ठीक है, मैंने भी घर पूछ लिया,
और बहू से सास का आप पूछो और सास से बहू का, और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी। अगर बहू आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है वो आपकी सास के प्रति रॉन्ग, और जो सास दे रही है छोटी सी क्या बात बताऊंगा, आपको जानकर बताऊंगा सास आपको केस कैसे ठीक किया था। अभी ये हमारा थॉट प्रोसेस हो जाएगा। ये मैंने केस दिया तो मैंने इसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, ब्रह्मा मेडिसिन ऐसे काम 10 दिनों दुखी, बस ऐसा ये मेरे पास बैठे रहे, थोड़ा मन हो जाता है, ऐसे करता बैठे हस्बैंड को इतना बहुत ही काम ऐसे केस होती है जिनको हस्बैंड की कंपनी अच्छी लगती है, ज्यादातर बुरी हुई लगती है, पता नहीं ये केस ऐसे था। तो मैंने उसको ब्रह्म बैठ कर दी। रियली इमेजिन आपको 15 मिनट्स पेशेंट के वो जो ब्राउन एक्सपोजिशन थी ना वो तरीके से थोड़ा सा थोड़ा सा हाँ तो ऐसे हिल नहीं रहा, सूजन आई हुई थी, ऐसे ही मुड़े ऐसे हिल नहीं रहे, बहुत बुरी हालत में पेशेंट था। She was not able to tolerate the torments of the condition. दुखी हो गए वो इतने दिन हो गए तक। ये बात नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातें छोटी छोटी चीजें हैं जो हम वो कर रहे थे वो हमारे काम की, बस ये मेरा आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि हमारे गुरु डॉक्टर सैगल साहब ने हमें वो चीजों की जानकारी दे दी जिनको हम जनरली इग्नोर कर रहे हैं। काइंडली लर्न दोस थिंग्स। मैं सैगल सर की बुक्स मैं अपने पास लेकर आया हूँ, मैं चाहता हूँ मैं डोनेट कर रहा हूँ हमारे इस कॉलेज की लाइब्रेरी को कि हमारे बच्चे इसको पढ़ेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी किसी को तकलीफ हो तो मेरे से बात कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि किसी मुश्किल को हल कर सकूं। तो काइंडली जो भी बच्चा यहाँ पर इस कॉलेज के हो तो कॉलेज की लाइब्रेरी से वो बुक्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आज आपके कॉलेज को जो बुक्स गुरु जी की डॉक्टर सैगल साहब की बुक्स में डोनेट करके जा रहा हूँ, तो आप काइंडली इसको पढ़ के ये राउंड डिस्पोजिशन मैंने पहले लिया। हम देखें आज तक का लिटरेचर बड़े बड़े स्टॉलवर्स के केस उन्हें ये सिम्टम को वैल्यू नहीं। कंपनी डिजायर फॉर फ्रेंड ऑफ है, वैसे घर वाला कभी फ्रेंड को देखा नहीं है पर कुछ हो भी जाते हैं, पहले फ्रेंड होते हैं बाद में घर वाले बनते हैं, वो काम बट उसको लग रहा था साइड के पास रहने से बस शांत हो जाता है, यू आर लकी, ऐसा मिला जिसको कि भाई फ्रेंड की कंपनी चाहिए वो रियली मैंने बहुत केस सॉल्व किए हैं इस, बट पेशेंट को जो अंदाज है ना उसको नहीं बोलना, वो किस अंदाज से कहे फ्रेंड होता क्या है, तो हूं बी कॉन्फिडेंट जो आपके दुख को समझे, जो आपको सुख में समझे, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जिसकी बात से आपको सुकून मिले, जिसके पास बैठने से आपका मन शांत हो जाए, ऐसी पर्सनैलिटी जिनमें सब चीजें पूरी, जैसे मां सबसे अच्छा दोस्त मां और बाप, ऐसी कंपनी अगर आपको अपनी वाइफ से भी करती है यू कैन कॉल हस्बैंड को भी यू कैन कॉल। तो ऐसी कंपनी, ऐसी जो गुणों के सहित आपकी जो कंपनी संपन्न है वो आपके लिए कंपनी ऑफ फ्रेंड होती है।
तो इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना, नहीं तो अदरवाइज सिंपली कंपनी है वो भी तब तक रहेगी जब तक वो ठीक नहीं होती। जब पेट ठीक हो तो लगता है भाई आप अपने काम पे जाओ, फिर ऐसी सिंपल कंपनी बन जाएगी। कंपनी ऑफ फ्रेंड भी, कंपनी ऑफ फ्रेंड तो तकलीफ में भी, दुख में भी, सुख में उसकी जरूरत पड़ेगी, वो कंपनी होती है फ्रेंड। एडवाइस लाइक फ्रेंड के पास बैठने से मसला शांत हो जाता है। पेशेंट ने तो कोई बात बोली ना, बस हमने समझ लिया उसकी दुख, ठीक है, the patient is quite okay, she is feeling very well, the single dose of Lmhmc। तो एक और केस, उसके बाद कितना टाइम है मेरे पास, how much time you have? आपको 2:30? Okay, I will try to summarize within that। छोटे छोटे केस ये भी आ सकता है। पेशेंट ने बोला सर मैं बैठ के नहीं पढ़ना चाहती, बस पेपर्स में काम करना पड़ता है, ध्यान नहीं है स्कूल में किसी काम करना पड़ता है, तो मेरे को ये कहना है कि काम पढ़ा है, वो पढ़ा है, वो पढ़ा है, मैं आराम नहीं कर सकती, मेरा मन बिल्कुल को शांति नहीं मिलेगा जब तक वो काम पढ़ा है घर का। बहुत मैंने किसी एक केस में अलग सा केस है कि ये छोटी छोटी बातें हम रूटीन में सुनते हैं, पेशेंट यूज भी बट आप इग्नोर कर देते हैं। जरा एक बार देखिए तो यू विल गेट द रेस्पॉन्स। हेल्पलेस फीलिंग, जान नहीं जाए फिर भी कर देंगे, आपको करना तो पड़ेगा कैसे घर का काम। और ये वेरी कॉमन भाषा है हमारे लिए, और इसी से हम सिंपली हम तक जाते हैं। फर्स्ट पीरियड्स जब तक काम पढ़ाए तब तक सांस कैसे पूरी आता है। एंग्जाइटी ऐसी इसमें ज्यादातर बहुत ज्यादा लगता है कि बच्चा भूखा मर रहा है, मैंने उसको फीड भी नहीं दी, उसको मैंने संभाला नहीं, अच्छा करता एंग्जाइटी ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत बार काम आता है। तो एक और केस बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप 1 मिनट और बैठिए, कोई जाइए नहीं, तो बस ये अच्छा केस है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये केस है एम्स में, इस पेशेंट को एडमिट किया गया था। ये उसकी डायग्नोसिस है DCMP। DCMP means dilated cardiomyopathy. This is an incurable disease. पेशेंट को बोला, उसकी मेरे पास वीडियो है, या कौन सुन नहीं सकते, मैं कभी ग्रुप में पोस्ट करूंगा तो सुन लेना। तो पेशेंट की रिलेटिव हमारे ग्रुप में हम इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं, तो उनकी आते रहते हैं रिलेटिव है। उन्होंने मेरे को बोला कि सर हम इस बच्चे को देख सकते हैं क्या? क्यों नहीं, कोशिश तो कर ही सकते हैं, अगर ठीक नहीं कर सकते तो कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो मैंने उस पेशेंट को मेरे पास फोन पे कॉल पे, वीडियो कॉल पे पेशेंट को कर दिया। उस बच्चा को ये बताया गया था, आपको ये विजिबल है ना, ये देखिए नीचे बढ़ है ना, बड़ा कम है। Heart rejection fraction was 7%. Rejection fraction 7%. Quite a fatal. और doctors told it is an incurable disease. Patient बता रहा है उस वीडियो में, इस बार मैं बोल दिया कि incurable है। हम इसमें एक कोई मेरे को पता नहीं है उसका नाम क्या है, उन्हें हम लगाते हैं। आजकल कोई नया इंस्ट्रूमेंट है, वो तब काम करता है जो हार्ट कोलैप्स होता है, अदरवाइज वो साइलेंट है। तो उसमें इलेक्ट्रिक एक वो निकलता है, वो हार्ट को एक बार रिवाइव कर देता है, वो उसी टाइम काम करता है जब हार्ट बिल्कुल कोलैप्स होगा तब काम करेगा, अदरवाइज नहीं। तो उन्होंने वो मेरे पास आया, मैं उसको बोला, पेशेंट ने बोला कि सर मेरे को एम्स की अपॉइंटमेंट मिली हुई है, आप फिर से जाते हैं।
तो क्या एम्स की अपॉइंटमेंट को लोग लॉटरी के हिसाब से मानते हैं, बड़ी मुश्किल से मिली है। तो मैंने पेशेंट को बोला कि प्लीज आप 1 महीना वेट कर लीजिए, गिव जस्ट 1 month only. If I could help, then okay. Otherwise, you can go for any further procedures. तो पेशेंट बोला कि सर टाइम है, अब मैं आपको स्टेट करता हूँ कि 7% में हमारे पास आया, कब गया वो भी आपके सामने आएगा। अब उसकी वीडियो में थोड़ी सी ब्रेक कर देता हूँ आपको, पर उसको देखते रहना, सबको कुछ आएगा, क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं है हमारे पास, आवाज नहीं है। ये पेशेंट को बचपन में, ध्यान से सुनिएगा इस केस को, जो बचपन में मेरे पास था, बचपन में इसकी माता की डेथ हो गई और शायद पिता की भी डेथ हो गई। इसको इसके मामा जी ने पाला, इसके नाना जी के साथ बहुत ही प्यार था। तो नाना जी की डेथ हो गई, पेशेंट को बहुत शौक लगा इस बात का। पेशेंट कह रहा है सर मेरे नाना जी चले गए ना दुनिया से, वो राज दुलार, वो प्यार मैंने खो दिया, कहां से लाऊं? उसके बाद मेरे को डेंगू हुआ, उन दिनों की बात है पहले। तो मेरे को एडमिट किया गया, मेरा ट्रीटमेंट किया, थोड़ा बहुत रिकवर हुआ। कुछ लोगों ने बोला कि भाई आपको तो टीबी हो गई है, और डॉक्टर्स ने टीबी का भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उससे भी मैं थोड़ा बहुत रिकवर हुआ। जब मैं पूरा रिकवर नहीं हुआ तो मेरे को बड़े हॉस्पिटल में दिखाया गया एम्स। तो मैंने बोला भाई इसको तो बहुत बड़ी हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज, कार्डियो मायोपैथी, तो ये तो इनक्योरेबल है, सर आप कुछ कर सकते हैं? मैंने बोला कि हाँ क्यों नहीं। पेशेंट एकदम ऐसा समझता ये ठीक हो जाता है, एक्सप्रेशन अब तो सर मैं मार रहा हूँ, बताइए। डॉक्टर्स ने भी बोल दिया, एक बार डॉक्टर्स ने बहुत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट का उन्हें नाम बताया, एक महीने का मैंने उसे टाइम दिया था, तो बट रिश्तेदार पेशेंट को रिसीट के दिन भी ले गए, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट जो था बोले कि भाई कब करेगा जब हार्ट फ्लैक्स होगा, उसकी एक्शन या उसके वो हो गया तो पेशेंट आ गया। ट्रीटमेंट चलता रहा, 1 महीने के बाद में जब उसका टेस्ट हुआ, अब इसको देखने में बाद में खाना आप इसकी रिपोर्ट्स देख लीजिए, क्योंकि आवाज तो आपको सुनाई देख रही है। ये 7% में हमारे पास आया था, वो तो देख लिया। तो नेक्स्ट इसके बीच में 1-2 और भी हैं, एक्चुअली एम्स वाले रिकॉर्ड देते हैं, वो टेस्ट रिपोर्ट्स कब देते हैं, वो तो बीच बीच में से फोटो स्टेट की। ये नेक्स्ट रिपोर्ट है पेशेंट,